No. Yeah, can we start now? Yes, ma'am. Please start. So good morning, everyone. So today is the last day of your 3-day workshop. I hope we have had good interaction amongst ourselves, and most of the students here are doing. Most of the teachers are our colleagues. So it has been a very interactive kind of a session yesterday. Yesterday, I had told many of you to send some activities, and I'm so grateful that some teachers have shared wonderful activities. I must put this on record that some of the low cost activities which have been shared here by the teachers are very, very interesting, and maybe they are not actually all are not life science, but we had kept it open, and we have the entries, or I may say that Sarita Khushwaji has sent her activity, Vaishali ji has sent her activity, Reema ji has sent her activity, Aarti Pawar ji has sent her activity, Poonam ji has sent her activity, Somyata ji has sent her activity, and I wish to thank each one of you who took time off, who thought about how can we reinvent our teaching, and very meticulously have categorized your activities. You have put in the apparatus required, what will be the learning outcomes after the students perform these activities themselves in the class. So I felt very I must say that encouraged that, some of the activities shared have an interdisciplinary element, where one of the activities on difference between metals and non-metals can be easily understood within 5 minutes in a classroom. And it's such a simple activity, and that was the motto of this workshop, to bring in some low cost activities, right? So just a moment. I'm sharing with you one presentation.
मोनिका मैम आ रही है थोड़ी देर में, बस 2 Is my मिनट। presentation visible? No मैम, it's not visible right now. Okay. Yes, it is present. Yeah. Thank you. So, on the basis of what we have done on 2 days, we have understood many new things, and teachers have really contributed through their activities. That is what I wanted to basically suggest here. Now, I am going to today take up another topic, and that topic is on lithosphere, soil, because it is taught in your uh, syllabus. It is there in the curriculum of various classes. It's in the environmental science also. It's in science also, and it is in SST also. So I thought, let me discuss in detail about the soil, the lithosphere, and give you some other more insights in how can we make these topics interesting about soil, and how can students contribute to their teaching learning process, and how can we actively involve students in various activities. So from class 5 onwards, we teach students about the earth's crust, right? So we tell them that this is the earth crust. I'm not going into the details because the interior details are not important, but upper surface of the earth, we talk about it. We talk about the mantle, we talk about the soil. This is how the soil uh, structure evolves over a period of time. But what we are interested in is lithosphere. Lithosphere is the area, it is the basic area where we are existing, where the soil is formed. So if you ask anybody what is soil, can you define what is soil? Any of you? Any of you? Can you define what is soil? Ma'am, soil is the upper layer of the crust. Anyone else? Ma'am, soil is the upper layer of the crust. Can you hear Yeah. me? Yeah, it's okay. But can anyone else define soil? Natural resource. Soil is a natural resource. Soil is the upper layer. Both of you are correct. Anyone else? Soil is the uppermost fertile layer of the earth crust. Upper fertile layer of the earth crust. Okay. Soil Anyone is else? the mixture of various organic material and the different type of decaying compositions, which makes the upper fertile layer of the earth. Okay. Anyone else? Withering is the main cause. Okay, weathering is the main cause of formation of soil. Anyone else? Soil is the thin layer of material covering the earth's surface and is formed from the weathering of rocks. Okay, you have completed, you have blended two things together. Anyone else? Ma'am, soil is a mixture of various minerals, organic matter, and various organisms. Mm-hmm. Okay, so Which is if you ask different people, now that I was asking, all of you the concept of soil, you see, for many people, soil has different meanings, right? किसी के लिए soil का मतलब है जहाँ upper layer of earth crust. Ma'am, can I? Yeah. Ma'am, we can say it's a abiotic resource or natural resource. Yeah, absolutely perfect. That's what I'm saying. For us, soil is a natural resource. Soil is a substratum. हर इंसान के लिए soil has some or the other meaning, right? For example, for an engineer, soil is something जिसके ऊपर वो बड़ी बड़ी buildings बनाता है. एक लेबरर के लिए वो soil के ऊपर जितने भी हम गंदगी डाल देते हैं उसको collect करता है. सॉइल एक इकोलॉजिस्ट के लिए क्या मीन करता है, एक बायोलॉजिस्ट के लिए क्या मीन करता है. सॉइल एक लाइफ सिस्टम, बिकॉज हम लाइफ साइंसेस पढ़ रहे हैं, तो एक लाइफ साइंटिस्ट के लिए
सॉइल का मतलब क्या है कि इट इज अ लिविंग सिस्टम. जब हम लाइफ साइंसेस की बात कर रहे हैं तो सॉइल इज अ तो एक इकोलॉजिस्ट के लिए सॉइल का मतलब है ये, इट इज अ लिविंग सिस्टम. इट इज a system where there are organisms, where there are plants growing, where there is air, right? And it is evolving. अगर आप soil को देखोगे वो हमेशा एक जैसी नहीं होती. The nature of the soil depends upon the climate. The nature of the soil depends upon the topography. The nature of the soil depends on the organisms. It takes years for the soil to build, and the parent material comes from the rocks, right? So we have to understand that soil is a complex. It is not just the upper layer of earth, or it is not just the weathered material. It is a very interesting ecosystem. It is a living system. It has various properties. It is not a function of a single thing. Soil has organisms which are important component of the soil. Soil has the हो ही नहीं रहा है ऐसे ना, चेंज करें. हाँ, so soil has various things. It has air in it, it has water in it, and it takes years for the soil to become. It takes years for this profile to develop. We do not go into the inner layers because that's not of our concern. Mostly for a biologist, it is the top layers of the earth, because it is the top layer of the soil which supports the organisms. And people invest years to study soil. Soil study in itself is taught as a different discipline. There are master's courses in soil sciences only. And it is a, soil के बारे में जानना is not only a biologist. zoologist को भी जरूरी है, क्योंकि soil के अंदर nematodes होते हैं, arthropods होते हैं, soil के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसलिए माइक्रोबायोलॉजी के पर्सन को भी soil के बारे में जानना जरूरी है. एग्रीकल्चरलिस्ट को soil के बारे में जानना जरूरी है. एक फॉरेस्ट साइंटिस्ट को भी soil के बारे में जानना जरूरी है. एक इंजीनियर को soil के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एक ज्योग्राफी के बंदे को soil के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एक जियोलॉजिस्ट को soil के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट को भी soil के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एक मैथमेटिक्स, वो इन सारे डेटा को स्टडी करता है, राइट? तो ये सब इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है. फाइन. So we have to understand that soil is a complex system, and it is an interdisciplinary field where knowledge of each and every subject will help in understanding the various aspects of soil. Right? Can you tell me anything else about soil, what you teach to your students? Ma'am, properties of soil and different types of soil. Soil profile. Please tell me, one of you can pick up what all do you talk about soil? May I, ma'am? Am I audible? Yes, you are. Ma'am, we are explaining about the different types of soil as sandy, loamy, and clay soil. And apart from this, different properties of the soil like color, texture, pore space, and then different layers of the soil. And apart from this, soil erosion and soil conservation as well.
We talk about rate of percolation and water holding capacity also. Monica ma'am is here. Dr. Monica ma'am. मैं हेलो मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ अब Yes, अब हो गया आपने अच्छा से सुंदर सा good. हेलो क्या हो रहा है इसमें ना बार बार मैं अनम्यूट हो रही हूँ कौन कर रहा है ये who has the I am speaking Network. no my network network is absolutely perfect but somebody is trying to unmute me you mute me again and again I am not aware I was going through the presentation and suddenly I am seeing that I am muted and when I try to unmute I am muted again I hope please इसको देख लीजिए कि कौन कर रहा है ये ठीक है मैम ठीक है मैं देखता हूँ जी मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले मोनिका मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को
क्या हो रहा है? I hope it is sorted out. Okay, so I want to again reinforce that when we are talking about soil in the classroom, we must ensure that we tell them that soil is not one thing. It is not generally, students have started believing in that soil is just the mineral particles, and mineral particles constitute 45% of the soil. But it is not just the mineral particles. Soil has a lot of air, like your atmosphere. The soil also has air because there are spaces between the soil particles which are held by the air. Soil also has water. 25% of the total soil is the water, because water is present between the pores, between the interstitial spaces, and it is this water which is there in the pores which is taken up by the plants. And soil is a lot of organic matter. Organic matter is formed when the dead material, leaves, etc., fall on the surface of the ground, and then it gets decomposed and it gets converted into humus. So if you look at the soil, it has organic matter, it has organisms, which include your earthworms, soil insects, soil bacteria, soil algae, and it has air, it has water. So soil, अगर हम ऐसे देखें, so it is a system which is helpful for everybody to talk about. एक physics का person भी soil teach कर सकता है, एक biology का person soil teach कर सकता है, एक water का जो scientist होता है वो भी soil के बारे में information generate करता है, and that is how we have understood. It is through the contribution of many people, many scientists, that we have now at least understood some aspects of the soil, but कुछ चीजें हमें अभी भी सीखनी है. So now coming back to the soil as an ecosystem. Why do I say that soil is an ecosystem? Because this soil is the medium for plant growth. It is the supporting, life supporting system in this plant. They are like womb. ये एक जननी है पौधों की. अगर इसके अंदर सीड जर्मिनेट नहीं करेगा तो पौधा जर्मिनेट नहीं कर पाएगा. सो इट इज लाइक ए वूम्ब. ये अपने अंदर बहुत समय तक सीड को रखता है. जब सूटेबल एनवायरनमेंट आता है तो फिर ही स्प्राउटिंग होती है सीड की. Also, through the soil, the exchange of the nutrients takes place. The dead material, leaves, etc., इनके अंदर nutrients store होते हैं, वो नीचे गिरते हैं, और जो soil के बैक्टीरिया, soil के arthropods, soil के earthworms हैं, वो उन्हें degrade करते हैं, decompose करते हैं, और nutrients वापस cycle होते हैं. Otherwise, nutrient cycling would not have been possible if the soil would not have been a living system. Okay, soil also helps in purification of water, because there is the mineral matter, etc., absorbs some of the constituents in the soil, some of the contents of the water, and then in pebbles, rocks, which are also part of lithosphere, they help in cleaning of the soil. Soil is an engineering medium, and soil is also a इतनी information जो हम आजकल soil के बारे में रखते हैं, it has come from years of research. काफी सारे साइंटिस्ट ने कई साल तक soil को स्टडी किया, अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टडी किया. इंजीनियर्स ने soil को स्टडी किया, हिस्टोरियंस ने soil को स्टडी किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने सॉइल को स्टडी किया, क्योंकि काफी सारे आर्कियोलॉजिकल रेलिक्स, काफी सारी पुरानी चीजें, काफी सारे जो जो अर्थ के अंदर एम्बेडेड है सिविलाइजेशंस, उन क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट दे लुक एट द सॉइल एंड दे डिग इट, एंड फिर वो पुराने रेलिक्स निकाल के ले आते हैं. तो सॉइल उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमें origin of soil, how the soil formed various layers, how the soil developed over years,
So it has come from the studies of various scientists, early 17th century onwards. The scientists have got interested in studying the soil. So, one of the earlier scientists who gave us information about the soil is Desor. So he, for the first time, pointed out that अगर soil नहीं होगी तो nutrition of the plants would be deprived, क्योंकि काफी सारे nutrients, magnesium, calcium, ये soil के अंदर ही होते हैं, and plants cannot take up nutrients directly. और वो जो water होता है soil के अंदर, उसमें ये nutrients dissolve होते हैं, and then only these can be taken up by the plants. So, this person, these days, Russia is in news, USSR is in news. So, Russia is famous for many things. If we if we get an opportunity to go to this place in Russia, you will see there is a big soil museum. It is called Dokuchov Museum. Vasily Vasilyevich Dokuchov. I don't know how whether I have pronounced it rightly, but the Dokuchov Museum in the USSR earlier, now in Russia, it has beautiful collections of soil. See, it is in St. Petersburg, Russia, and this is a very big soil institute. Around 8,000 people, they are working there, and they are studying various attributes of soil. They are studying various aspects of soil. They are looking at the soil specimens which are collected from various places. अगर हमें soil को study करना हो, how do we know? अगर हमें बच्चों को कुछ छोटे से experiments करवाने हो soil के, what are those? जो researchers होते हैं वो teams में चले जाते हैं. कोई उस research team में कोई soil के mineral composition को study करता है. उस research team में कोई soil के archaeological aspects को study करता है. उसी team में से कुछ लोग soil के other attributes को study करते हैं. लेकिन एक टीम जो होती है वो रिसर्च के पर्पस से सॉइल को स्टडी करती है. लेकिन जब हम स्कूल में सॉइल पढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, उनमें से ये वाला एक्सपेरिमेंट मेरे को इंटरेस्टिंग लगा. हम इतना बड़ा खड्डा ना खोद के हम छोटे छोटे पिट्स खुदवा सकते हैं सॉइल के अपने ही स्कूल के गार्डन में, and then we can tell them to appreciate. देखो आप देखो, अगर आप देखोगे ऊपर से नीचे तक क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल, वी मे कॉल इट, इट्स अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल. हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, दिस इज द ह्यूमस, then it is rich in organic matter, then there are rock materials deeper, and water flows through, water remains stored in a particular layer, and there is a rocky layer just beneath. So ये सब हम दिखा भी सकते हैं. You can easily also see the color varies in different layers, and if you compare this cross section of the soil from top to bottom, is called the soil profile. So we can compare the soil profile of one place with another place. At the outset I told you that soil बनने में टाइम लगता है, और सॉइल का टाइप, सॉइल का प्रोफाइल डिपेंड करता है कि उस सॉइल में ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, वहां का क्लाइमेट कैसा है, और वहां की वेजिटेशन कैसी है. तो अगर आप कंपेयर करोगे सॉइल प्रोफाइल in one area with the soil profile in some other area, गाजियाबाद का सॉइल प्रोफाइल करोगे ग्रेटर नोएडा से कंपेयर, या एक ऐसा एरिया जहां पे आप राइस ग्रो कर रहे हो, एग्रो इकोसिस्टम है वो भी, उसको कंपेयर करोगे जहां पे आप ये लगाते हैं, धान लगाते हैं एक जगह, और एक जगह मे बी मस्टर्ड लगाते हैं, सरसों लगाते हैं. If we compare the two soil profiles of the two areas where rice is grown or where brassica or mustard is grown,
you can see the variation, because I told you कि soil के profile में the various factors which play a part are the plants, the climate, the vegetation, the organisms which are present here. So one of the low-cost activities which I am suggesting you regarding the soil is you can dig pits. You can ask the students to dig pits at various places and compare the soil profile or compare the vegetation vis-a-vis the soil profile. So this is a college student who is looking at the soil profile, measuring कि किस zone का कितना area covered है, ऊपर वाले profile का कितना area है, second zone का कितना area है, third zone का कितना area है. So these markings are important. These markings are used by the researchers to find out the variations in the soil profile. They compare the color of the soil profile also. So here you can see this is the soil profile. पढ़ाते हैं हम बच्चों को. This is the cross section of the soil, basically given in majority of the books. So you have O layer, which is the uppermost. You have A layer, where you have humus, etc. You have E layer, where leaching takes place. You have B layer, where the accumulation of clay and development of soil bulk takes place. You have C horizon, where consolidated earth material along with some of the rock material is there, and then you have the consolidated rocks. So if you grow from core towards the upper layer, you can see the zonations. The top layer, lithosphere itself, is divided into various sublayers from top to bottom. We call this as the soil profile. So horizons of a typical soil profile are decomposing organic material, decomposing organic material, and many soil ecologists have divided the upper layer into O1, O2, A and E layer, then second layer B1 and B2, third layer C, R. So you can have various subzonations also, depending upon the area we are talking about, depending upon the place we are discussing. The number of soil layers can vary. Again, I have tried to make it more clear that basically the basic division is O horizon, A horizon, B horizon, C horizon, and R horizon. And O horizon is the O and A horizon are important from the biologist point of view, because it is here the roots go. It is from here the organic matter is derived, right? Again, this is the soil profile from a forest soil. Just to make you understand that the soil profile varies in different regions. Vegetation has a role in determining the profile. So when you look at the forest area, because you can see here, you can see trees, the profile is different. When you look at some other areas, the profile would be different. For example, this is a area where humid vegetation is there. तो आप देखो इसका profile थोड़ा different होगा. अलग अलग एरियाज के सॉइल प्रोफाइल वेरी करते हैं. यहाँ मैंने कंपैरिजन दिखाया है कि ये एक टेम्परेट एरिया का है कि ट्रॉपिकल एरिया के कंपेयर करोगे तो आपको सॉइल प्रोफाइल में वेरिएशन मिलेगा. अब देखो यहाँ पे रॉक का स्ट्रक्चर, यहाँ पे रॉक का स्ट्रक्चर, यहाँ पे बी जोन का स्ट्रक्चर, ए जोन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे ए जोन का स्ट्रक्चर. सो the profile which we discussed, this profile, A horizon, O horizon, the length of the particular horizon, the area occupied by the particular horizon will be different in different areas
depending upon the climatic conditions, tropical, temperate, depending upon the vegetation type, these are going to vary. Again, see, these are two soil profiles. You can see the color में कितना difference है. अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ रेड कलर की सॉइल होती है. अगर आप दक्कन प्लेटू में जाओगे तो वहां आपको बहुत वैसी वाली सॉइल मिलेगी, फिसलने वाली सॉइल. इट्स वेरी स्लिपरी काइंड ऑफ अ सॉइल. अगर आप एरिड एरियाज में जाओगे दिल्ली जैसे तो आपको ऐसी वाली सॉइल मिलेगी. सो जस्ट टू tell you that there is a difference in the soil profile of various regions. This is a comparative analysis. This is a comparative chart. See, this is a temperate deciduous soil. एक temperate deciduous area की soil का horizons दिखाए हैं. यहाँ पे coniferous forest, जैसे कि उत्तराखंड के एक pine forest की soil को आप अगर compare करोगे, so it will be like this. The profile would be like this. This is a grassland soil, maybe Gwalior, Madhya Pradesh, Indore ki soil. If you look at that, it will show you this kind of a profile. If you go to Western Ghats, you can get this kind of a profile. If you go to a desert area like Rajasthan, Kutch, you will get a different kind of a horizon. Soil horizon, soil profile, the thickness of each layer, A layer, O layer, B layer, C layer, that varies because I told you that soil is a function of the climate. The climate plays a very important role in determining what should be the soil profile like. The vegetation plays a very important role and it determines what should be the horizon be like, right? So we have to understand that soil is a very important ecosystem and the soil plays a very interesting role in deciding which kind of crops should be grown, what kind of plants should come up in that area. So people have studied these aspects in detail. So many things depend upon the profile. So many things depend upon the amount of the available organic matter in the soil. How fast the humus is formed. That will also determine what kind of cultivation should be done. In some soils, I told you the water is accumulated fast. In some soils, the water is not accumulated fast. So water accumulation, availability of water in the soil will also affect the growth of the plants, the growth of the root system. Here you can see this is an undrained soil and this is a drained soil. So look at the shoot system and look at the root system. So this can be a very interesting activity which can be created for the students in the class, that you can take two pots. In one, take the soil which is drained, and in another pot, take undrained soil. And then after, say, 20 days of the plantation, compare the two plants. Many attributes of the two plants can be compared. This can be a project which can be given to a student. You can tell them to take the length of the shoot system, compare the length of the shoot system. Count the number of the leaves, count the number of the branches, count the number of the roots, secondary roots, tertiary roots, length of the roots, length of the primary roots. All these are quantitative parameters. They can be easily, counted in the classroom settings. If you have a weighing balance, you can even compare the biomass of the drained and undrained soil. The plants which are same plant you grow in drained soil, and for example, makka le rahe ho aap, maize, grow in drained soil and grow in undrained soil. Or take pea plant, pea seed, grow in a drained soil and grow in an undrained soil. And compare the various parameters. What are the various parameters you can compare? Can any of you
answer back. What kind of various parameters can be? Length of the shoot system, number of leaves, biomass of drained and undrained soil, and length of the roots also. Yeah, so this is important. Like now color of the soil is another thing which I generally suggest one should ask the students to do. Color can be a qualitative. We cannot quantify color, but qualitatively बच्चे mark कर सकते हैं कि इस जगह की soil का क्या color है, X जगह की soil का क्या color है, Y जगह की soil का क्या color है. So it will again, color of the soil can be taken. I am referring to color very intentionally because, there is a person who gave a color chart. I have put that color chart here. Yeah. See, जैसे हम हेयर डाई लेते हैं, जब उस हेयर डाई के साथ एक ये होता है ना, डीप येलो, सॉरी ब्राउन, डार्क ब्राउन, नंबर्स दिए होते हैं. अगर आप में से कोई डाई लेता है और या डाई करता है अपने बाल, तो उस डाई के साथ एक कलर चार्ट भी होता है. 1 नंबर का वुड बी डार्क ब्राउन, 2 नंबर वुड बी लाइट ब्राउन, 3 नंबर वुड बी ब्राउन. देखा है ना आपने, जो हम कलर खरीदते हैं उनके नंबर्स होते हैं, जो डाई खरीदते हैं, जो स्टैंडर्ड डाइज हम बालों में लगाते हैं. ऐसे ही एक सॉइल कलर का चार्ट है, मुंसेल कलर बुक. The Munsell color book is used to document color in the soil. अगर आपका कलर है, अगर ब्लैक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. ये एक स्टैंडर्ड कलर बुक है जिसमें आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ स्टडीज सॉइल की प्रॉपर्टीज को, कलर को कंपेयर किया गया है. द सॉइल कलर हैज बीन कंपेयर्ड विद द सॉइल प्रॉपर्टीज. So what now we do is we look at the color of the soil and compare it with the chart which is here, and then the representative data of the properties is given in the color book. So this color book costs around 200 rupees. So if we can buy this Munsell color chart or Munsell color book, the students can be engaged by telling them to compare the color of the soil and assign it a particular property. They can make a table, so they can be involved in their learning process. Because color वो सीख ही रहे होते हैं primary classes से. Color is an important thing and you don't need a high cost equipment for doing the color, right? So I would suggest that you can use this as an activity in your classrooms. Is it clear? Yes, ma'am. Why I suggested this activity is because soil color is an easily identifiable property. It can be easily identified. It can be used to relate chemical and physical properties such as drainage, chemical constituents. अगर redness होती है तो उसमें iron की presence होती है. अगर white होते हैं colors तो silica की presence होती है. तो हम काफी सारे इस color book में बहुत सारी information है जो color को correlate कर रही है to some other properties. So अगर हम अपने schools में ये color book रख सकें तो हम बच्चों को क्लासरूम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, राइट? कहाँ पे थी मैं? ओके, दिस इज जस्ट टू मेक यू अवेयर. और बड़ी क्लासेस को पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे सॉइल पढ़ाना होता है, तो these are various aspects which we discussed there. So this is a soil map, and this has been taken by a special satellite because we use geographical information systems to find out
the nature of the soils. So nowadays, satellite imagery is also done to identify various kinds of soils. And ये भी पढ़ाते हैं हम बच्चों को different types of soils in India. Soil map. कौन सी class में है? Which class do we teach the types of soil? Sandy soil, loamy soil, laterite soil, mixed soils, alluvial soils. पढ़ाते हैं ना बच्चों को? Yes, ma'am. Class 7th. Again, we can do an art activity along with this. Students to not only this, I would rather suggest that give them a blank map and tell them to mark the areas where black soil is found. And when you tell them to soil is found, then the question will come to their mind, why are these areas having black soil? Give another group another map costs 10 paisa, and tell them to mark the alluvial soils, or another group tell them to mark red soils. Another group you can tell them to mark the desert soils. So then you can tell them to discuss within themselves. This is called peer-to-peer learning. We can incorporate peer-to-peer learning through these activities in the classroom. So every group will tell why does he think that the marked areas have black soils. Black soils to usne mark kar diya on the basis of memory or whatever. But kyun? Why do these areas have black soils is the question. Why do certain parts of India have red soils? Why do certain parts of India have desert soils? It is we can do this activity very easily, and it's a low cost activity. And then by this, they will get to know about their own country, the diversity of the soils in country. We can go a step ahead, right? We can tell them also to compare the crops which are growing in these regions. तो जहां जहां पे black soils है, वहां पे क्या क्या crops grow करते हैं. Second activity को extend कर सकते हैं हम. जहां जहां पे येलो सॉइल है, तराई सॉइल है, वहां पे वो क्या क्या क्रॉप्स ग्रो करते हैं. जहां जहां पे डेजर्ट सॉइल है, ब्राउनिश, वहां पे क्या क्या क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं. जहां जहां पे पिंकिश कलर है, सैंडी सॉइल रिप्रेजेंट करता है पिंक कलर, वहां पे क्या क्या क्रॉप्स ग्रो करते हैं. सो इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन, you see the pink area is towards the west here. But here in the east also, in the southeast parts of India also, there are these pink markings. Can you see in the map? See, you can see pink here on the western Indian side. Then you see southwest area also has a lot of pink. South में भी है थोड़ा, फिर western eastern area की और जाओ southeast की तरफ, तो बहुत सारे pink areas है. तो अगर जब हम कंपेयर करेंगे कि यहाँ क्या क्रॉप्स ग्रो करते हैं और यहाँ क्या क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो क्या कोई कोरिलेशन है? इज देयर एनी कोरिलेशन? पेपर है कोई? This can be another activity, right? Now, I just talked about the constitution of the soil, that air is 25%, mineral matter is this, 25% is water, and then you have organic matter, which is composed of organisms also. Some of the properties of the soil, which we can discuss in the classroom, not all. We can test the pH of the soil, right?
How do we test the pH of the soil? Has any one of you done the pH of the soil in the classroom? Do you do anything related to pH? Yes, colleagues, dear teachers, I want an answer. Ma'am, no. Relate, no. किसी किसी चीज का हम pH देखते हैं क्या कभी भी क्लास में? आप जैसे वो पढ़ाते हो एसिडिक एसिड्स एंड बेसिस. यस मैम, बेसिकली ये जो स्ट्रिप का यूज करते होगे आप लोग? Yes, ma'am. हाँ, तो वो वाला करते हैं ना कि आप लेमन का pH देखते हो, लेमन जूस का. Yes, ma'am. With the help of litmus लाइम paper. वाटर का Ma'am, देखते हो. indicators के Indicators. through, but we just identify like whether they're acids Yes. or bases, not the pH. Yes, we are doing it. So you know, गुड़हल के फूल के द्वारा भी. किसके द्वारा? Natural indicators. किसके we also द्वारा? do. हाँ, Natural indicators. यूनिवर्सल इंडिकेटर. जी मैम, गुड़हल का फूल मैम. Ah, correct. Gurel ka food, correct. Turmeric also. यस मैम. Yes, ma'am. And ma'am, red cabbage also. We are what I'm very good. तो हम लोग pH करते हैं, राइट? हम सॉइल का pH भी करवा सकते हैं. सॉइल का pH करवाना क्लासरूम में बहुत इजी है, क्योंकि हम लो कॉस्ट एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं. तो सॉइल के pH को करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? डिस्टिल वाटर, और कुछ भी नहीं चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं? वी So what we can do is we can take the soil, थोड़ी सी सॉइल कलेक्ट करके ला सकते हैं गार्डन से, अपने घरों के पार्क से, एंड वी हैव टू टेक 1 part of soil, 8 amount of soil, and mix it with 5 parts of distilled water. Distilled water is important because अगर हम टैप का वाटर लेंगे तो टैप के वाटर का भी अपना pH होगा जो सॉइल के pH को अफेक्ट करेगा. तो इसलिए इस एक्सरसाइज के लिए हमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए. दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर विच यू विल हैव टू स्पेंड मनी. और बाकी कुछ भी नहीं करना, हमें सॉइल लानी है, और सॉइल को हम वे भी कर सकते हैं. अगर वे नहीं भी करना चाहें, अंदाजे से 1 part of soil and mix it with 5 parts of distilled water, right? When we mix 1 part of soil with 5 parts of distilled water, तो हम उसको फिर घुमाते हैं. हम उसको कॉनिकल फ्लास्क में, किसी बॉटल में, किसी बीकर में, किसी ग्लास में, लो कॉस्ट की बात हो रही है. We will stir it, we will shake it, swirl it. हम उसको घुमाएंगे ताकि सारा जो सॉइल के अंदर मिनरल्स एंड जो आयंस हो वो डिसॉल्व हो जाए, और फिर हम इसको डिकेंट ऑफ कर सकते हैं. ये अब सॉइल सस्पेंशन बन गया. सॉइल को आपने पानी में मिला लिया तो सॉइल सस्पेंशन बन गया, लेकिन अच्छे से शेक करना है. वी हैव टू रिगरसली शेक इट, स्विल इट, एंड आफ्टर 5 to 10 minutes of shaking we will leave it for a while. We will decant it off, or we can filter it. बहुत क्रूड सा फिल्टर पेपर. अगर फिल्टर पेपर नहीं भी यूज करना, we can decant it off. Decantation, we will leave it for a while so that the solid substances settle down at the bottom, and you can drain off the water in another test tube. अब उस टेस्ट ट्यूब में हम लिटमस पेपर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या pH है. सो पहले सॉइल का देख सकते हैं, सेकेंड सॉइल सैंपल का देख सकते हैं, and then we can compare the pH of different soil samples of district Ghaziabad or district Noida. I hope I am clear. समझ आया लोगों को? Yes, ma'am. So how do we find out the soil pH? 1 part of soil, 5 parts of distilled water.
distilled water is the only requirement, then shake, swirl rigorously, decant off, or filter. And then you can do an easy litmus paper test. Fine. Now another thing is texture. We can compare the soil texture. How? Texture is based on the size of the mineral particle. What is soil composed of basically? What is soil composed of? Mineral particles. And sand and clay particles. Soil is composed of many things. Mineral particles, but there is Organic air, matter. there is, but texture is attributed to the size of the mineral particles. Soil texture का मतलब होता है कि ये कैसी soil है? Is it soft? Is it coarse? Is it fine? We say, no, this is a fine textured soil. This is a coarse textured soil. Fabric को भी हम बोलते हैं. तो अगर हम हाथ पे soil को लेते हैं, if it gives us a fine feeling or a coarse feeling, that is what we call as a texture. But this texture is based on the size of the mineral particles. Fine? The size of the mineral particles. अगर बड़ा size होगा mineral particle का, तो उसको हम बोलते हैं coarse textured soil, sand, gravel. But अगर particle size is very small, see यहाँ पे दिखाया है proportionate. This is a coarse sand. फिर इससे कई गुना छोटा है फाइन सैंड, इससे कई गुना छोटा है क्ले, और इससे कई गुना छोटा है डॉट के फॉर्म में क्ले. तो आप देखो एक सॉइल में एक कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल और फाइन टेक्सचर्ड सॉइल के पार्टिकल्स में कितना अंतर है, राइट? बट कोई भी जो सॉइल होती है उसमें सिर्फ क्ले पार्टिकल्स नहीं होते, उसमें सिर्फ सिल्ट के पार्टिकल्स नहीं होते, उसमें मिक्सचर होता है. लेकिन परसेंटेज, कौन सा पार्टिकल का हाईएस्ट परसेंटेज है? अगर क्ले के ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है तो हम उसको क्लेई सॉइल बोलते हैं. मगर ये ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि जो सॉइल है, कोई भी सॉइल हो, उसमें सारे पार्टिकल्स एक साइज के नहीं होते. कुछ पार्टिकल स्टोन होंगे, कुछ ग्रेवल होंगे, कुछ क्ले होंगे, लेकिन हाईएस्ट प्रोपोर्शन जिसका है हम वही टाइप बोलते हैं. अगर सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसी सॉइल के मिनरल पार्टिकल्स में सैंड का है तो दैट इज सैंडी सॉइल. अगर मेजर प्रोपोर्शन क्ले का है, on the size of the mineral particles, soil is classified into silt, fine sand, coarse sand, gravel, etc. Right? Again, just to reinforce कि sand इतना बड़ा है, ठीक है? The size of the sand is 2 to 5 होना चाहिए था, 5 mm. Silt is 0.05 to 0.002 mm and less than 0.002 mm is clay. तो clay डॉट है, silt इतना है और sand का साइज इतना है. तो एक सर्कल से ही हमने डिफरेंट साइजेस ऑफ सर्कल से डिटरमाइन कर दिया कि व्हाट इज, यू नो, नाउअडेज वी आल्सो हैव सम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल. बहुत सस्ते से आते हैं. आपके सबके घरों में आरओ है ना, बहुतों के घरों में आरओ होता है. Yes, ma'am. वहां तो खारा पानी भी है उस एरिया में. तो majority of the people have. Yes, how many of you have ROs in your houses? I'm sure everyone has. Am I audible? Okay, Yes, Yes, ma'am. Okay, Kanchan. See, आप कितनी बार आरओ की सर्विस करवाते हो साल में? Yes, ma'am, you are. आपने
की सर्विस करवाते हुए देखा है किसी ने आरओ की सर्विस होते हुए देखा है? Voice is breaking. Your voice is breaking वो a lot. यस मैम देखा है। मोनिका मैम थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आपके तरफ से, थोड़ा ठीक कर ली। हाँ? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आपके तरफ तो से, जो वॉइस वो इंस्ट्रूमेंट लेके मैम नाउ ऑडिबल है। अच्छा हो सकता है 1 मिनट के लिए हो गई हो. So I am saying that when the RO person comes to your homes for checking the pH, he has a digital instrument in his hands, and that digital instrument costs 300 rupees, right? So of the water, it tells you about the pH of the water, it tells you about the total dissolved solid in the water, right? So we can use the digital instruments, which are now very cost effective. They do not cost very high. Their prices are very low. And we can also test some of the properties of the soil. अब देखो ये normal thermometer है, ठीक है, 100 रुपए का भी नहीं आता नॉर्मल थर्मोमीटर. तो इसी थर्मोमीटर को हम सॉइल का टेम्परेचर यूज, थर्मोमीटर which we use for measuring our temperature, or a simple 100 rupee 90 rupee thermometer which is available every year for taking the temperature of the soil. टेम्परेचर का तो प्रोसेस सेम ही है, दैट मर्करी राइज का टेम्परेचर को भी बच्चों को समझा सकते हैं. वाटर के टेम्परेचर को कंपेयर किया जा सकता है, राइट? वी कैन कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर. दीज आर वेरी लो कॉस्ट. अब आप कहोगे कि क्यों सॉइल के टेम्परेचर से फायदा क्या है, या वाटर के टेम्परेचर से क्या फायदा है? This should be the question. Because temperature affects the germination of seeds. Temperature has an implication on the growth of roots. Temperature affects, is a physiological process. Germination के time enzymes mobilize होते हैं. Germination के time embryo से cotyledonary leaves निकलने शुरू कर जाते हैं. बहुत important physiological process है seed germination. और सीड जर्मिनेशन वूम के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, which is a womb for the seeds. And knowing the temperature of the soil will also be an important parameter to assess the soil, assess the role of soil in growing of the plants, assess the role of soil in the germination aspects. So you can correlate various things. अगर अब झाड़ू के बाद बैंगन चढ़ा देना. अच्छा, बैंगन चढ़ा देंगे मैडम, बिल्कुल चढ़ा देंगे. तो हम बैंगन का भरता बना रहे हैं फिर, ठीक है? मैम मैंने ना अपने प्लांट्स में खाद डाल दी थी, तो वो शायद ज्यादा डाल दी थी, इस वजह ओवर हीटिंग हो गई होगी, उसकी वजह से मैम मेरे कई प्लांट सूख गए थे. तो मैं तब मुझे बहुत ज्यादा मतलब मुझे लगा कि मेरे को बहुत थोड़ा मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो टेम्परेचर का कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मैंने मतलब बहुत मैं वो हुई थी कि मेरे बहुत सारे प्लांट्स खराब हो गए. Absolutely. So we can have an impact of temperature. We can study the impact of temperature on the plants because it affects the germination, it affects the growth of the roots, and again, जो water availability है वो भी temperature से affect हो जाएगी soil की. क्यों? Because if the temperature is high, water will turn its phase from the liquid phase into gaseous phase. The water which can be taken up by the plant roots is the liquid water which is present in the roots. But if the temperature becomes very high, the water gets converted into water vapor,
and thus there is no water available for the uptake by the roots. So temperature affects the growth of the plants, and temperature can be easily assessed using the low cost instrumentation. Any questions till now? Any questions till now? मैम उसके बाद जब मेरे मैम प्लांट्स खराब हो गए थे तो मुझे उसके बाद लगा कि जब खाद डालने के बाद खेतों में पानी क्यों डाला जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे तब जाके क्लियर हुआ था. Absolutely. Yeah, that's very important because नहीं तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, गर्मी हो जाती है सॉइल में के अंदर. ओके, अनदर थिंग, वैसे तो ये क्लास ये मेरे को दिखाना था. अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है दिस वन, और ये जो पीएच मीटर है, जो डिजिटल पीएच मीटर है, मैंने कहा वो कितने का आता है, 300 रुपए का डिजिटल पीएच मीटर. और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, this is called as Lovibond comparator. This also costs 400 rupees. I think 300-350 rupees इसका अगर बल्क में हम खरीदते हैं तो. This is called Lovibond comparator. ठीक है. अब इसमें क्या करना है हमें, बस यही है इंस्ट्रूमेंट पूरा. इसके अंदर 2 क्यूवेट्स हैं, ग्लास क्यूवेट्स, और एक क्यूवेट में हम डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, और एक क्यूवेट में हम वो वाला वाटर डालते हैं जिसको हमने सॉइल सस्पेंशन बना के जो लिया. फॉर एग्जांपल मैंने गार्डन की सॉइल ली, उस गार्डन की सॉइल को मिक्स किया डिस्टिल्ड वाटर के साथ सस्पेंशन बनाने के लिए in 1:5 ratio. Then I decanted of that. So this is my blank. Blank is my distilled water. एक क्यूवेट में I keep the blank, and एक क्यूवेट में I keep the sample, test sample, soil sample का suspension. And then in both the cuvettes, I put indicator. You said that indicators are available in your schools. So you put one drop of indicator in this, one drop of indicator in this, and you close it. Inside the shake it before putting back, so that indicator gets uniformly mixed with the samples. Then we compare the color here. यहाँ पे जो कलर आता है वो यहाँ पे एक डिस्क होती है, उसके कलर के साथ correspond करना चाहिए. And this can tell us the pH. I will show you one video where the Lovibond comparator is used. So, Ma'am, this is also for measuring pH only. Yeah, this is a very simple instrument. ये पहले आया था, but ये आपको बहुत exact pH नहीं देता, but ये आपको काफी हद तक okay pH दे देता है. ठीक है. This is called as Lovibond comparator. ये देखो, ये है Lovibond comparator. Welcome to our new series, Miles Global Icons, with me. Ma'am, your screen is not shared. Yeah, I will. Inspiring stories of how USCPA has changed people's lives across the world. Before we hear from others, Miles wants me to share my CPA journey. So let's roll. Keypads. Demonstration for Lovibond Nest Laser Color Comparator Model 2150. Accessories: comparator with stand, one pair of Nestle cylinders. Optional accessories. Oh. Regular disc also optional. Need to buy a Nestle cylinder and disc separately. ये डिस्क है. This is the disc which I was telling you. इस डिस्क के कलर्स देख रहे हो ना आप, अलग अलग है.
ये 2 क्यूवेट्स रखने की जगह है, जिसमें एक में हम टेस्ट सैंपल रखते हैं और एक में रखते हैं सॉइल सैंपल, सॉइल का जो हमने सस्पेंशन बनाया है। दोनों सैंपल्स को रखने के बाद हम फिर यहाँ से ये डिस्क डाल दी, इस डिस्क के कलर को हम कंपेयर करते हैं, वो हमें बताता है यहाँ पे, इस जगह पे हमें दे देता है पीएच। In one Nestle cylinder, then keep the sample in another cylinder as per your prepared sample with the use of reagent or DTP tablets. Then close the cover. Then rotate the disc and match the color of the sample with the disc. Now it is matched. And then take the reading on the disc. Thank you for watching this video. So I guess you have seen the video now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a moment, मेरा ना कॉलेज से फोन आया. Okay, I'm going to go through how to do. तो ये भी एक है, but I will not go into the details of this one. Tests and so I will pH stop test using a sharing comparator rather than a photometer. On the back, you'll see. So I have told you about this activity. And, Fennel red. Not sure if you can see. And then you'll be able to tell as well by the colors. Okay. So this is what I feel is, some of the things which we can use in our classrooms. And this is not a very costly instrument. Class 8 में आप बच्चों को introduce कर सकते हो ये सारी चीजें about soil, right? Other things which I feel are important regarding the soil, which can be, done in the school, is to make them understand the difference between litter and humus. I understand that these days every school is trying to make biocompost, biofertilizer. These things are taught, and every school has an environmental club also. So one can ask the students to collect the litter in the garden. Litter would be? मोनिका मैम आपका यहाँ पर जीमेल अकाउंट दिख रहा है. Oh. Okay. Just a moment. Oh, मेरा ये वाला दिख रहा है. Okay. So we can just do one thing. You can compare the litter and humus in the classes, because as I said, many of the schools have environmental clubs. Many of the schools have the societies where biocomposting and all is also taught. So even in the class 7th, 8th, you can make them understand how the litter turns into humus. So they can collect the twigs, leaves, etc., and put them in a bucket
or they can dig a pit and put them there, put some water in it, and add some organic matter which is already there, गोबर ओबर उसके अंदर डाल दो, क्योंकि गोबर के अंदर ऑलरेडी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, या कुछ earthworms डाल दो उसके अंदर, and see after 20 days what is the status of the litter. The litter turns into humus. So you can compare the difference between the properties of litter and humus. You can compare the pH of the litter and pH of the humus. So students can also get to know how cycling of materials takes place. These are also very low cost activities which can be done in the classroom, right? So there are many things regarding the soil which we can do. I have already told you just yesterday or day before yesterday that there are some fold scopes which are available. You remember that? Fold scope microscopes? Yes, which I discussed that day. Yes, ma'am. And you can procure them from the Amazon, I told you. तो आप क्या कर सकते हो, जो ये सॉइल का सस्पेंशन बनाया आपने, जैसे मैंने बताया कि आप वाटर के ड्रॉप्स को स्लाइड पे रख के ऑब्जर्व कर सकते हो, वैसे ही आप सॉइल सस्पेंशन के ड्रॉप्स को स्लाइड पे रख के ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट? तो जब आप सॉइल सस्पेंशन को ऑब्जर्व करते हो अंडर द माइक्रोस्कोप, तो उसमें भी आपको थोड़ी डाइवर्सिटी पता चलेगी सॉइल ऑर्गेनिजम्स की, क्या क्या ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल के अंदर. तो यू विल गेट टू सी सम फंजाई, सम बैक्टीरिया, सम सिंगल सेल प्रोटोजोन्स. कुछ हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे विद फोल्ड स्कोप. एल्गी आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर सॉइल सस्पेंशन में एल्गी आ जाए. बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन से टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड है, कॉमा शेप्ड है, ये सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग फोल्ड स्कोप. तो दिस इज अनदर एक्टिविटी दैट कैन बी डन विद द students. So, as I said, soil microorganisms are very important and we need a microscope for studying those. See, look at, this is just the data. Look at the number of microorganisms in the soil samples. There are billions of bacteria, there are actinomycetes, there are fungi, there are nematodes. So at least 1 or 2, 3 we can identify from the data, from by the observation. मेरा इंचार्ज और जो हेड है वो तो टॉयलेट बाथरूम में फोन ले जाना मत भूल. So, there are many things in the soil which I thought would be useful for the teachers of the schools. And according to the syllabus which is there in class 6, 7th, 8th, there are many things that get covered through the soil topic. So first of all, let me wrap up in a nutshell. They will get to know about the soil. They will get to know about the constituents of soil. You can make them familiar about soil water, soil air, soil organisms, mineral matter. Then we can take up some of the properties of the soil like pH and do simple low-cost experiments for pH, like making soil suspension and using indicator solutions with Lovibond comparator, or using pH paper. You can look at the soil color by comparing it with Munsell chart, which is a very non-expensive booklet, around 400-500 rupees. We can also carry out experiments, which I told you, drained and undrained soil experiments, and ask the students to take measurements and draw some inferences. We can also use simple instruments like thermometer to find out the soil temperature at different sites in the campus itself. Tell them to go to a ground area, tell them to go to some shaded area where there is no sun, and take the soil temperature. So there are some low-cost exercises
through which the topic of soil can be explained. I'm sure all of you are so versatile, you are so well informed about the theoretical aspects, but how to correlate theory with the practical? Most often the teachers complain that there are no instruments. The idea of having low cost technology, low cost instrumentation is this only, that we should not deprive students of the experiential knowledge, field knowledge, because we do not have sophisticated instrumentation. Some instruments can be used which are not costly, and you can even design lots of activities. I'm so grateful that you shared some of the activities. I guess this talk or this interaction was useful. Now I open the session for questions, and if you have any questions, please ask. मैडम, ये अभी आपका पीपीटी शो कर रही है या ऐसी बता रहे अभी? हेलो हेलो, I'm not sharing anything. I have just concluded. okay, thank you. So are there any questions? If there are no questions, then you take a break for 10 minutes, because I think Romila has to come, na? Yeah. Dr. Kakru, I yesterday did a very interesting activity with them. I told them to share some of the exercises. There were some on the group also. Yeah, they have shared some of the exercises which I told them to think of yesterday. And I think we must acknowledge those teachers who have shared their activities. They have put some time together to bring those activities to this platform. So Kanchan Rawat ji has done this, Soumyata ji has done, Poonam ji has done, Aarti ji has done, Reema ji has submitted an activity, and we will compile these activities and use them in our future workshops. Vaishali ji has submitted, Sarita ji has submitted. Thank you, everyone. I wanted to acknowledge your contribution in the form of sharing your knowledge on this platform. Whosoever wishes to submit, also they can submit, because everybody is in the group. So they can submit today also. It's not something we have closed that. And then we'll compile it and share it with everyone, how it is, how we can take it further. Yes. Thank you so much. Are there any questions? I hope this session was useful to you, and you're going to take some of this knowledge back to your classrooms if there is an addition to. Doesn't matter, Kanchanji, you people can take your own time and think about it. The idea is that you plan certain activities which are useful for the students, and they enjoy and they become a part of learning process. They should get involved. Then only they will enjoy the subject. That's what I feel. Thank you so much, everyone. I guess there's a break now. So you can take thank a 15 you, Monica. Romila has already come, so but we are having a break for minutes another 10 break. minutes. 15 minutes would be enough, sir. 15 minutes. Yeah. Good morning, sir. Is But not a break. in between, anybody wants to interact with each other, they can do it. Yeah. Thank you. I'll take your leave. Thank you for being a very nice, interactive group. I'm grateful that you all interacted, and it makes things easy. And then, I also feel that somebody is listening to me. If people don't interact, I think I'm talking to the names, not to the people. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Romila, for joining us. Thank you. We Hello, ma'am. Good evening. Good morning, sir. Yes. Yeah, hi. Hi, ma'am. So we start the session at 11:50. It's 11:35. Right, sir.
Namaste. Monica ma'am, Yeah. can all these activities which has been sent to you through email, can it be shared on the group also, so that we can also have a glimpse of that? See, what we are planning to do is we will compile all these activities and share with everyone. Okay, thank you very much. Let's first have all of them, then we'll compile them, and then we will share. Okay, thank you very much. Thank you, ma'am. That will be great learning. This is for sure that we are going to share them. Okay, thank you That is very why much. we've asked. So the idea of this workshop is not only to have these 1.5 hour sessions. See, why I've joined this group, or why Romila agreed to join this interaction, is that we strongly feel that school teachers are very good. They work really hard. But the only problem is that students do not feel that they are involved. Most often we make them listen to us. So the idea is that they become a part of learning. तो आप उनसे कुछ एक्टिविटीज करवाइए, और वो वाली एक्टिविटीज मत दीजिए जो घर में पेरेंट्स को करनी पड़ती हैं, और फिर आप उनको, उनके पेरेंट्स को जज करते हैं, उनको नहीं जज करते बच्चों को. तो आप बच्चों को जज करने वाली एक्टिविटीज दीजिए और बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से एक्टिविटीज दीजिए. Yesterday I told you, see, किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं है तो फिर हम उसे ड्राइंग पे क्यों इवैल्यूएट करते हैं. किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है पर उसके एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो लेट्स हैव दैट काइंड ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर, बिकॉज साइंस पढ़ने के लिए हैंडराइटिंग should not be a hindrance, or drawing should not be a hindrance. So this is what I want you to go back with, that you go to your classes, don't make distinctions on the basis of handwriting, drawing, answering, remembering. Every student will have something, and we need good students in science, not those students who can score well only. I'm not saying that those who are scoring well are not good, but those who are not scoring marks are not bad. This is what I'm telling you. So I guess that's what I want to leave here with. Thank you. Thank you, everyone. मोनिका मैम, जी, क्या टॉपिक कवर किया आपने आज? मैंने आज सॉइल, मैंने कुछ एक्टिविटीज बताई जो स्कूल स्टूडेंट्स, सॉइल पे तो काफी सारे, ठीक है. हाँ, वही सब पीएच, how to compare the drained and well drained soils, by looking at the plants, plant in a drained soil. तो बच्चों को कुछ कितने पैरामीटर्स हम बोल सकते हैं करने को. एक ड्रेन सॉइल में प्लांट डालो, दूसरे नॉन ड्रेन में, और फिर उनके लीफ पैरामीटर्स को करो, हाइट को करो, लेंथ को करो, तो बच्चों के लिए कुछ करने को हो जाएगा. Low cost activities which can be planned with the students. So some very simple activities I have told them, and giving them a brief about the soil, not in depth what we talk at higher levels. General introduction about the soil and all. Right, ma'am. Thank you. Okay. So I guess I will leave now because I have to go somewhere. I have to go. Chalo, Romila, I Sure. will go there and I'll join back. Bye. Thank you, Dr. Monica. We'll be sharing feedback form in this chat box, so kindly pick copy that and fill and send it back. Anybody willing to interact with Dr. Romila, they can do it. Yes, I'm available here. Yeah, Romila ma'am, I asked you about the reproduction in animals. Activity, Yeah. you were saying that you will share something. Yeah, Poonam ma'am, I have visited some of the sites, and there are few sites available. No, I will not say many sites available where activity-based explanation is there. So that was our main aim कि हम पढ़ाने को तो like हम diagrams दिखा दे, वही जो भी मोनिका मैम कह रहे थे कि बच्चों से diagram पे diagram बनवाए जा रहे हैं. But वो जो मैंने अभी sites देखी हैं, they are based on some activities. So वो मैंने ना अपना slides में end में डाल दिया है.
So you can take a screenshot of Right, that, right. and or I will share the links of those sites in the chat box. ठीक है, थैंक यू मैम। वो अच्छी एक्टिविटीज हैं बच्चों की, लाइक ग्रुप डिस्कशन टाइप का बच्चों में आपस में करवा सकते हो उसमें ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी हैं और डिस्कशन बेस्ड भी हैं, तो उस तरह की एक्टिविटीज अच्छी रहेंगी। राइट मैम, थैंक यू। लगाने से मैट। चलिए मेरे साथ जोर जोर से बोलिए।
I think Romila ji, everybody is here only, so you can just start it. जी सर. सर मेरे को शेयरिंग का एनेबल करना पड़ेगा. हाँ जी अभी करते हैं. इम्तियाज इनको एनेबल कर दो. So once again, good morning, everyone. So I hope the morning session and the last few sessions which we had were fruitful to you. I today will be continuing with what experiments based study which we were talking for the last 2 days. मेरा basic aim है कि हम ये जान सकें कि जो experiment हमको बताए जा रहे हैं हम बच्चों को सिर्फ verbally ना बताएं, easy से easy तरीके में कैसे हम बच्चों से वो करवा सकते हैं. स्पेशली जब ऐसा टाइम चल रहा है जब अभी तक क्लासेस नहीं खुल रही थी और अब खुलेगा तो हो सकता है सारी चीजें आपको अवेलेबल ना हो, तो सिंपलेस्ट वे में कोई भी प्रैक्टिकल हम कैसे करा सकते हैं. तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट एंड आई जस्ट वांट कि आप अपने आइडियाज इसमें पुट अप करें जितना ज्यादा आप कर सकते हैं. आप हम डिस्कस करेंगे आपस में कि किसी एक एक्सपेरिमेंट को हम मॉडिफाई करके किस तरह से बच्चों को वो करने को दिया जा सकता है विदाउट गिविंग देम मच ऑफ द बर्डन, विदाउट गिविंग देम any burden to their parents. And as we are keen on low cost experiments, we will be focusing on that, right? So आज सुबह I hope soil के ऊपर तो आपने बहुत नए नए और simple experiments भी देखे होंगे या मोनिका मैम ने बताए होंगे कैसे कर सकते हैं, कैसे involve किया जा सकता है, क्योंकि environment में we can plan a number of projects, very small projects कि बच्चों को हम वो दे सकें और बच्चे खुश होके वो प्रोजेक्ट करते भी हैं, राइट? तो हम इसी के बारे में आप जानेंगे आज. अगर जब तक मुझे परमिशन मिलती है स्क्रीन शेयर की, आप लोग मुझे बताइए कि अगर पिछले अभी तक के सेशन में कोई एक्सपेरिमेंट आपने ट्राई किया हो या कोई डिफिकल्टी आ रही हो किसी में, किसी एक्सपेरिमेंट को समझने में, या कुछ आपकी तरफ से कोई आइडिया आया हो कि क्या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, तो प्लीज आप मेरे से वो डिस्कस कर लीजिए जब तक आई गेट परमिशन टू शेयर माय स्क्रीन. अभी वो इम्तियाज फोन नहीं उठा रहा है तो तब तक आप डिस्कस कीजिए प्लीज. हाँ बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है. तो मुझे बताइए कि मैं आप लोगों का, मैं यहाँ पे कुछ लिंक्स, जैसे पूनम मैडम ने मुझे बोला था, उनका रिक्वेस्ट आया था कि एक टॉपिक हम लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, हम जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है हम नॉर्मली थोड़ा थोड़ा करके ये इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों में. तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड कम है, राइट? कहीं भी प्रैक्टिकल जो एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल्स की बुक है या कहीं पे भी आपको इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोसेसेस या एक्टिविटीज नहीं मिल रही हैं. तो मैंने ये कुछ आप लोगों के लिए ढूंढ के आया. आई एम पोस्टिंग दीज वेबसाइट इन द चैट बॉक्स, तो आप लोग गो थ्रू देम. दे आर सिंपल एक्सरसाइज. यू कैन हैव अ ग्रुप डिस्कशन. आप क्लास को ग्रुप्स में बांट दीजिए, बॉयज एंड गर्ल्स के अलग ग्रुप बना सकते हैं, मिक्स ग्रुप बना सकते हैं, एंड बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज सो दे कैन टॉक अबाउट देम. There are specific websites also which are dedicated to growth, development, and sex education to students. You should please, all those teachers who are teaching these topics should visit that site and have an idea how to make it easier for a teacher to interact with the student with these So, Romila, topics. you have been made co-host. Yeah, sure, sir. I'm just sharing few of the links here. So, आप इस Yes, ma'am, आप कर सकते हैं. हाँ सर, मैं करती हूँ अभी शेयर. मैं थोड़े से ये जैसे पूनम मैम की रिक्वेस्ट थी तो मैं कुछ लिंक शेयर कर दे रही हूँ चैट बॉक्स में. एंड आई रिक्वेस्ट एवरी टीचर हु इज टीचिंग बायोलॉजी शुड विजिट दिस साइट, बिकॉज अचानक से हम क्लास 8th में ये टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं करते, धीरे धीरे करके बच्चों को सारी एक्टिविटीज करवाते हैं तो वो अकस्टम्ड हो जाते हैं उस तरह से उस चीज को पढ़ने के लिए. Okay, because there are lot of questions since the beginning. जब बच्चा 5th क्लास में भी होता है, 4th में होता है, they start to develop changes. So
वहीं से आपको उनका ट्रेनिंग शुरू कर देना चाहिए, उनको नॉलेजेबल बना देना चाहिए कि हमें ऐसी चीजें किस तरह से हमें आपस में इंटरेक्ट करना होता है. So I hope Poonam ma'am, you can see the links in the chat box. Yes, ma'am. Thank you so much. Yes, ma'am. उसको कंप्लीट करने का टाइम आप इसका भर दीजिए और इस लिंक को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देता हूँ. So I hope my screen is visible now. Yes, ma'am, it's visible. Yeah, thank you so much, sir. So since the last 2 days, I'm talking about the process of respiration, which is a very important process when we are talking about living organism. So respiration एक ऐसा टॉपिक भी है कि हम बच्चों से आराम से डिस्कस भी कर सकते हैं कि हम सांस ले रहे हैं तो हम जिंदा हैं अगर हम किसी को चेक कर रहे हैं. So this is the first R, which is one of my favorite when we talk about living organism. So the last topic in this respiration that we are discussing, we have discussed that respiration kya hai, breathing kya hai, how do animals breathe, how do plant breathe, what are stomata, and what are the other functions of stomata. That also we have discussed. We have discussed many activities based on these stomata for the study of stomata and for the function of stomata. Okay, right. So आज जो हम चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, that is, अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टिल रेस्पायर कर सकते हैं? बिकॉज वी से दैट ऑक्सीजन जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए. ओके, सो स्टूडेंट शुड आल्सो नो दैट कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉट ऑल, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पार्ट हैं जो ऑक्सीजन की कमी में या बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं. तो बेसिकली रेस्पिरेशन, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन था, इज रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग? सो देयर इज नॉट नेसेसरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकिंग प्लेस. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर शुड बी ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, देयर शुड बी combustion of the food. So if this combustion of food taking place in absence of oxygen, maybe ये incomplete oxidation हो. Okay, so if it is taking in absence of oxygen, that is even possible, and that is called as anaerobic respiration. Okay, so most of the organisms which are respiring are aerobic respiration. They respire aerobically, which we say that they require oxygen. Okay, so oxygen is a very important gas which is required, but there are some of the organisms, based on their conditions where they live, where they occur, they can be anaerobic, कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, even then they can respire, even then they will produce energy, and they can also produce the gas carbon dioxide. Okay, क्योंकि शुगर्स के अंदर अपना एक ऑक्सीजन होता है, it is C6H12O6. तो ऑक्सीजन के जो 6 मॉलिक्यूल हैं वो इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेशन. अभी तक हमने पढ़ा रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर ऑक्सीजन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर रहे थे. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज बेसिकली इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन. ओके, और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी इनफैक्ट 2-3 तरह का होता है. The most common one which occurs in plants, bacteria, is alcoholic fermentation. और ये ऐसी एक प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकली भी यूज किया जा रहा है फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस, फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फर्मेंटेड फूड, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जहां पे भी आपको फर्मेंटेड प्रोडक्ट चाहिए, ब्रेड इंडस्ट्री हो गई, बेकर्स इंडस्ट्री हो गई, तो वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन को यूज किया गया है. So there are some organisms which are called as obligate anaerobe. जब ऑक्सीजन नहीं है तो वो जिंदा है, तो वो काम कर रहे हैं, तो दैट मतलब उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन है ही नहीं.
इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो क्लॉस्ट्रीडियम आपने सुना होगा, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक बैक्टीरियम है, इट कॉजेज डिजीजेस आल्सो एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट एनारोब। सो देयर आर मल्टीपल एग्जांपल, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ वो एग्जांपल लिखे हैं जो थोड़े कॉमन हैं, जो आपने सुना होगा। और बैक्टीरिया के अलावा देयर आर सर्टेन फंजाई आल्सो व्हिच आर ऑब्लिगेट एनारोब। ये फंजाई आपको पता है, इट इज अ सैप्रोफिटिक organism but it respires aerobically. Okay, वो किसी और के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट रहता है, बट अपने अंदर it respires aerobically. But of course there are certain fungi which are anaerobe also, and pyromyces is one of them, a very common one that resides inside the elephant. Okay, उसका host elephant है, उसकी टंग, उसकी ट्रंक के अंदर या कहीं पे it can grow easily, जहाँ पे भी उसको ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक है, जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पे पायरोमाइसिस मिल जाएगा आराम से। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ देयर सर्वाइवल इन एनारोबिक कंडीशन, आप देखेंगे कि बैक्टीरिया, फंगस, ये सब ओमनी प्रेजेंट है, ये हर जगह मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर रहे हैं, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर रहे हैं। बैक्टीरिया तो थर्मोस्टेबल भी है, तो वो that is why वो it can be available at any place. Okay, but what we are going to talk today, or what the examples which we will take for our experiments today, we'll be talking about facultative anaerobe. Facultative anaerobe क्या होते हैं? झूठे। ये वैसे तो aerobe होते हैं, they can respire in presence of oxygen and they normally respire in presence of oxygen, but if conditions are such that oxygen की supply रुक जाती है या oxygen नहीं मिलती है, the same organism can also respire anaerobically. So depending on the condition, the same organism can respire anaerobically and such organisms are facultative. तो yeast की हम बात करते हैं, तो yeast aerobe भी है और anaerobe भी है, दोनों काम करता है। अगर oxygen नहीं मिलेगा तो it can even work anaerobically. Rhizobium. Rhizobium, you must have heard of this bacteria. This is a nitrogen fixing bacteria. Okay, and rhizobium कहाँ मिलता है हमें easily? Leguminous plants. Roots of leguminous plants. Roots of the leguminous plant. Okay, वैसे ये soil के अंदर होता है. It is present in almost every soil. लेकिन इसका एक symbiotic host है जिसके अंदर ये जाता है और कॉर्टिकल सेल्स की एक्सेसिव ग्रोथ करता है और उसकी वजह से उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो जब ये सॉइल में होता है उस टाइम पे इट इज एन एरोब, तब वो नॉर्मल ऑक्सीजन वाली रेस्पिरेशन करता है। ओके, रूट के अंदर भी जाता है, इवन देन हमको पता है रूट के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, रूट के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो वहां पे भी एरोब है यहाँ। लेकिन जब इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, ये अकेले नहीं कर सकता, ये होस्ट के अंदर ही कर पाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्या प्रॉपर्टी है? इट इज डन बाय द एंजाइम, इट इज द एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नाइट्रोजनेज। ये एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ तो सब जगह रूट के अंदर ऑक्सीजन है, तो कैसे करेगा नाइट्रोजनेज काम? एट दैट पर्टिकुलर टाइम the genes of this bacterium and the genes of the host, उनको nod genes कहते हैं, genes of rhizobium and genes of host, जो these genes work and they result in excessive division of the cortical cells, जिसकी वजह से nodule बनता है। साथ ही में जो cortical cells होते हैं, they form a small membrane around the rhizobium. Rhizobium बैक्टीरिया के आसपास एक पतली सी मेम्ब्रेन बन जाती है, इसको कहते हैं पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन बनता है विच इज कॉल्ड एज लेग हीमोग्लोबिन। तो ये सबको पता होगा कि लेग हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ठीक है, दैट विल स्कैवेंज द ऑक्सीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉर्टिकल सेल। लेकिन राइजोबियम का क्या? वो अब कैसे रेस्पायर करेगा? हाउ विल इट रिमेन लिविंग? बिकॉज इट इज अ facultative anaerobe.
ठीक है, उसको ऑक्सीजन नहीं भी मिल रहा है, even then it can survive in that condition inside the nodules of the root without oxygen. Okay, so this is how rhizobium can work in both the condition. और yeast तो आप लोगों ने देखा ही है, the baker's yeast. सारे एक्सपेरिमेंट जो हम बच्चों को कराते हैं, राइजोबियम वो आइसोलेट नहीं कर पाते. ठीक है, राइजोबियम बच्चों के बस का नहीं है आइसोलेट करना. यू रिक्वायर माइक्रोबियल लैब फॉर इट. आप उसका कल्चर बना सकते हो या प्योर कल्चर मार्केट से खरीद सकते हो, बट आप उनको रूट नोड्यूल्स दिखा सकते हो. कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट, उसका आप रूट आप उसको जमीन से उठाओ. सो आजकल सर्दियों के सीजन में तो देयर काफी मेथी वगैरह होती है, तो और बहुत इजीली मिल जाती है. तो व्हेन यू अपरूट इट, उसके रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं. You crush those nodules, you can see the bacteria under the microscope. So this experiment requires a microscope. So there is a limitation. अगर आपको बच्चे से घर पे कराना है तो शायद आपको माइक्रोस्कोप ना मिल पाए. ठीक है, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, आप कब उसको क्रश करोगे, कौन से नोड्यूल के अंदर बैक्टीरिया आराम से आपको दिख जाएंगे. होंगे पूरे में, कोई भी नोड्यूल बनेगा, बैक्टीरिया उसमें ग्रो करने लग जाएंगे, उसमें तक पहुंच चुके होते हैं. लेकिन जब नोड्यूल का कलर पिंक हो जाता है, क्या आपने कभी अपरूट किया हो कोई लेग्यूमिनस प्लांट, तो और उसमें नोड्यूल बने हुए हैं, तो या तो वो व्हाइट से होते हैं या कई बार वो पिंक कलर के नोड्यूल्स होते हैं. पिंक कलर का नोड्यूल मतलब उसमें लेग हीमोग्लोबिन बन गया है. इसका मतलब बड़े बैक्टीरिया का साइज भी बैक्टीरोइड्स, यू कैन सी द लार्ज साइज बैक्टीरियोइड्स नाउ. ठीक है, तो इसमें उस कंडीशन में आपको माइक्रोस्कोप में ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया दिखते हैं व्हेन द नोड्यूल कलर इज पिंक. ठीक है, तो प्लांट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप क्लास में ये एक्टिविटी कराते हैं तो आपको नोड्यूल जो सेलेक्ट करने हैं, दैट शुड बी नियरली पिंक इन कलर. ओके, डोंट टेक द व्हाइट नोड्यूल, उसमें बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा आपको. तो however I have told you the limitation, किसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए एक्टिविटी के लिए. okay, this is an easy method. okay, हाँ, हम फैकल्टेटिव एनारोब की बात कर रहे थे, तो ये तो दो ऑर्गेनिजम्स मैंने बता दिए जिसमें फैकल्टेटिव एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. So the higher plants which are aerobe, some of the parts of those plants can also become anaerobe at time. Okay, जैसे seed है, a stored seed, it is एक stored seed है, तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसका मेटाबॉलिज्म जीरो है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट जीरो, एंड उसमें रेस्पिरेशन भी जीरो है, वरना वो ग्रो कर जाएगा, उसमें रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, in initial condition this seed can also respire anaerobically. तो एक जो सीड होता है वो भी anaerobically respire कर सकता है. ठीक है, तो this is a very simple experiment to show whether respiration can take place without oxygen or not. okay, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीकर लिया, बॉइलिंग ट्यूब लिया, we fill both beaker and boiling tube with mercury. Now property of mercury is that it is very dense, तो ये हमेशा नीचे को बैठा रहता है. दूसरा, तो अगर हम इसमें seeds introduce करते हैं, we have to introduce seeds into it. तो जब हम इसमें seeds introduce करते हैं, because mercury is denser, seeds take the top position, ऊपर आ जाते हैं सारे seeds. ठीक है, और second thing कि ये वाटर जो होता है, वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है. अगर हम इसकी जगह वाटर ले लें तो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है, तो ये कंफर्म नहीं करेगा कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. मरकरी में ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होती है. ठीक है, सो हम मरकरी लिए हम और यहाँ पे सीड्स डाल इंट्रोड्यूस करें, सीड्स ऊपर चले गए. ठीक है, आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व योर सेटअप, से आफ्टर 2 to 3 days when you observe your setup, you will see that a gap is built here. This gap is because of the seeds have respired anaerobically और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है.
So this carbon dioxide has taken up this space here. How will you prove that this is carbon dioxide? कोई बताएगा मुझे, कोई तरीका जिससे हमें कंफर्म हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ऑक्सीजन नहीं है? How can you prove that? By collecting a lime water test or something. हाँ, बट लाइम वाटर आप इसमें कैसे इंट्रोड्यूस कर पाएंगे? थोड़ा सा मुश्किल है, isn't it? तो हम क्या करते हैं, QH का टैबलेट्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं. Okay. Alkali. उसका भी वही रोल है, that will absorb कार्बन डाइऑक्साइड. तो जैसे हम एल्कली इंट्रोड्यूस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है, इसका लेवल फिर से राइज हो जाता है. इस एक्सपेरिमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन हम ले सकते हैं कि सीड कोट और सीड, इसके बीच में कुछ एयर होती है. तो कोई हमसे बोले कि अरे जो बीच में एयर थी वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही हो रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है? So for this experiment, one precaution or one step in the protocol is you remove the seed coat. Seed coat ही remove कर दिया तो जो बीच में air थी उसका chance ही खत्म हो गया. तो definitely अब जो respiration हो रहा है वो anaerobic respiration हो रहा है. Now इस experiment को आप लोगों ने किसी ने कभी स्कूल में कराया है ये experiment? Any one of you, कभी ये स्कूल में एक्सपेरिमेंट हुआ in any class, किसी भी क्लास में, या डेमोन्स्ट्रेशन में ही दिखाया हो? Yes or no? No ma'am. No ma'am. No, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, फिजिबल भी है, कुछ करना भी नहीं है. प्रॉब्लम पता है क्या है इस एक्सपेरिमेंट में? मरकरी का कॉस्ट 8,500 पर 500 ग्राम. और 1 किलो मरकरी अगर आप ले लो तो उसका वॉल्यूम सिर्फ इतना ही होता है, 74 ml. और इस सेटअप को बनाने के लिए आपको कम से कम 100 ml तो चाहिए होगा, या 50 ml मरकरी तो चाहिए ही होगा, राइट? तो इतना महंगा एक्सपेरिमेंट तो मैंने नहीं सुना कभी भी किसी कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी नहीं सुना मैंने कि कोई कराता है. ये एक्सपेरिमेंट मैंने सिर्फ बुक्स में देखा है. ठीक है, और आई होप आप सभी टीचर्स हैं, आप सब ने भी ये बुक्स में ही देखा होगा. Yes ma'am. राइट? मैंने तो इसका यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखा कोई, मैंने बहुत ढूंढा मुझे नहीं मिला कोई वीडियो इसका, क्योंकि इतना महंगा एक्सपेरिमेंट फिजिबल नहीं है. आप या तो बहुत छोटा सब कुछ डिवाइस कर लो, आप छोटा सा कंटेनर छोटा ले लो और ट्यूब छोटी ले लो और एक चना डाल दो उसमें, तो शायद आप इसको दिखा सकें. बट हमारा कॉलेज नहीं अफोर्ड कर सकता, हम नहीं करते ये. ठीक है, This is high cost activity. हाँ जी, एग्जैक्टली, इट इज नॉट अ लो कॉस्ट एक्टिविटी. तो अदर एक्सपेरिमेंट है उसको सिंपली डिजाइन किया है यूजिंग यीस्ट. ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत फिजिबल है क्योंकि यीस्ट बाजार में मिल जाता है. आप किसी भी केक की शॉप पे चले जाए, बेकरी शॉप पे चले जाए, आपको वो वैसे ही यीस्ट पकड़ा देगा. इनफैक्ट घर में भी जो लोग केक वगैरह बेक करते हैं उनको ईस्ट पता होता है कि कहाँ मिलता है, आराम से किसी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाता है ईस्ट. तो अवेलेबिलिटी ऑफ ईस्ट इज इजी है. ठीक है. सेकेंड थिंग कि आप इसको लाइम वाटर से टेस्ट कर सकते हैं, और या फिर आपको इसको KOH फिनोफ्थिलीन, जो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था, दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द एल्कली और वो वापस न्यूट्रलाइज हो जाएगा. किसी भी चीज से आप टेस्ट कर सकते हो इसको. सो आई होप ये एक्सपेरिमेंट हम सब ने स्कूल में करा है या करवाया है. वेयर यू टेक अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने शुगर सॉल्यूशन डाला. शुगर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यीस्ट आपको मार्केट में मिलेगा वो एकदम सॉलिड सा होता है या पाउडर फॉर्म में होगा, मतलब ड्राई यीस्ट होगा. ठीक है, क्योंकि मोमेंट उसमें मॉइस्चर आएगा तो वो ग्रो करना शुरू हो सकता है. तो हमने जब ये यीस्ट और इसको शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि ग्रो करने के लिए इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए. इट इज एन ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सिर्फ पानी नहीं चाहिए, इट रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स. तो या तो पानी के अंदर ही न्यूट्रिएंट हो, या फिर हमने अच्छा खासा शुगर सॉल्यूशन बना दिया तो फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स आ गए बहुत सारे. आप मतलब यीस्ट के ग्रो करने के लिए मीडियम आ गया. सो दिस इज द ग्रोइंग मीडियम. तो ग्रोइंग मीडियम में हमने यीस्ट डाला in the ratio of around 5:1. Okay, and उसके बाद you put an layer of oil onto it.
ऑयल ऊपर आ जाएगा, ऊपर एक लेयर बना देगा इसके. सो दैट विल कंफर्म कि ये जो यीस्ट आपका रेस्पायर कर रहा है दैट विल बी रेस्पायरिंग एनारोबिकली, क्योंकि ऊपर अगर एयर है भी आपके टेस्ट ट्यूब में, it because of the oil layer it will not be in the contact of the yeast here. Okay, तो anaerobic respiration prove करना है तो आपको ऑयल का लेयर यहाँ पे डालना पड़ेगा. अगर आप ऑयल का लेयर नहीं डालते हैं even then respiration will take place, लेकिन आप ये कंफर्म नहीं कर पाओगे कि ये एनारोबिक हो रहा है या एरोबिक हो रहा है, क्योंकि यीस्ट है फैकल्टेटिव एनारोब. ठीक है, अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो वो उसमें भी रेस्पायर करेगा, बढ़िया रेस्पायर करेगा. ठीक है, हम इसको टेस्ट ट्यूब ग्लास ट्यूब से कनेक्ट कर रखे हैं. द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इज इनटू अ बीकर containing lime water. So as anaerobic respiration will take place, carbon dioxide will be released. This carbon dioxide will enter into lime water and turn it milky. So this is a simple experiment which a student can perform in the lab. Things are easily available and the result is very clear. It is evident to us. Okay. अगर ये experiment हम बच्चों को घर में करने को भी दे सकते हैं. Very simple method is shown here. कोई बॉटल लिया, बॉटल के अंदर आपने यीस्ट का सॉल्यूशन बना दिया. That is the nutrient solution, the sugar solution and yeast inside the bottle. Okay. और उसको अलाउ कर, और उसके टॉप पे you just put a balloon there. So because of the generation of gases, because of the production of carbon dioxide gas, the pressure is generated and air is filled inside the balloon. So this is just a demonstration experiment, a simple demonstration experiment. ना आपको lime water चाहिए, ना आपको phenolphthalein चाहिए, ना KOH चाहिए, एक balloon चाहिए, एक bottle चाहिए. To demonstrate this is an easiest way to demonstrate this experiment. Okay. और आप कैसे टेस्ट करोगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर? Can you test कि majority of carbon dioxide is present here now? आप इसको lime water, ma'am. You can again you can put this in a balloon into the lime water. और सिंपली अगर आप किसी बर्निंग कैंडल के पास भी ले जाओगे इसको, तो और बैलून को वहां पे रिलीज करो तो द कैंडल विल पुट ऑफ. ओके, ऑक्सीजन होगा तो ज्यादा तेज बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो जल्दी बुझ जाएगा. सो दैट ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आप बच्चों को कह सकते हो कि घर में परफॉर्म करो. ठीक है ना, परफॉर्मेंस से क्या कर सकते हैं वो, दे कैन फर्दर मॉडिफाई दिस एक्सपेरिमेंट. एक प्रोजेक्ट दे दीजिए उनको कि कितना रेशियो चाहिए आपको शुगर और यीस्ट का, अलग अलग रेशियो में क्या होता है, कितना, आप कैसे पता चलेगा कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है या कम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. तो आप साइज ऑफ द बैलून नाप सकते हैं, कितना फूला, जितना बड़ा फूलेगा जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. ओके, so this is again an image of similar kind. Okay, first condition में it is simply water or a very low concentrated yeast, मतलब yeast ज्यादा है और sugar solution बहुत कम है. ठीक है, फिर उसके बाद ये बाकी जो आप इसमें देख रहे हो, they have increased the concentration. जितना ज्यादा yeast और sugar होगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, उतना ज्यादा बैलून का साइज होगा. सो दिस सिंपल वे टू मॉडिफाई एन एक्सपेरिमेंट, सिंपल वे टू चेक दैट कि रेस्पिरेशन यीस्ट कर रहा है, ये बैलून जो फूल रहा है वो यीस्ट की वजह से फूल रहा है. दिस इज अनदर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट. यहाँ पर क्या लिया, शुगर और पानी लिया, यीस्ट नहीं लिया. यीस्ट और पानी लिया, शुगर सॉल्यूशन नहीं लिया. यहाँ पे यीस्ट, शुगर, पानी तीनों चीज ले लिया. ठीक है, और यहाँ पे यीस्ट, शुगर, पानी को बॉईल कर दिया. तो ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि बॉइलिंग कैन किल एन ऑर्गेनिज्म एट हाई टेम्परेचर. द ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म इज नॉट वर्किंग. ओके, सो इन चारों कंडीशन में सिर्फ जहां पे लिविंग यीस्ट है, शुगर सॉल्यूशन है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और बैलून फूल जाएगा.
So this experiment is again very simple. आपको बस conical flask लिया या bottle लिया, yeast डाला, sugar solution डाला, और this inflation of the balloon proves that the gas is being released by the organism, and it is released as a result of respiration of an organism. ठीक है, अगर आप ऑयल का उसमें लेयर बना देते हो, it proves that it is because of the anaerobic respiration and not because of the aerobic respiration. Okay, so I hope ये वाला एक्सपेरिमेंट तो हम सब बच्चों को इजीली करवा सकते हैं. ठीक है, इसमें आप किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन कर दो, कोई केमिकल डाल दो, साइनाइड की, अगर मतलब हम स्कूल में तो नहीं होता होगा, बट अगर यू हैव दिस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड, यू पुट अ ड्रॉप ऑफ इट, तो उससे रेस्पिरेशन में फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है. यू कैन टेक योर एपरेटस टू डिफरेंट कंडीशन. ठीक है, आप इसको फ्रिज में रख के देख लो कि लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है. यू बॉयल करने की जगह आप हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा दो, 28 डिग्री या 38 डिग्री कर दो, तो उस टेम्परेचर पे रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो यू कैन मॉडिफाई योर एक्सपेरिमेंट टू शो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल. जैसे हमने ट्रांसपिरेशन में अपने सेटअप को अलग अलग कंडीशन में ले गए थे, ऐसे यहाँ पे इस सेटअप को भी कहीं पे भी ले जाना बहुत आसान है. So this is a simple way to demonstrate. If you do not have this lime water or potassium hydroxide phenolphthalein, you can simply demonstrate this experiment by this method. और demonstrate जरूर करिए. इससे क्या होगा, बच्चा घर जाके खुद परफॉर्म करेगा कि कुछ भी नहीं है इस एक्सपेरिमेंट में, तो घर जाके मम्मी को भी दिखाएगा कि देखो बैलून अपने आप फूल रहा है, जादू. तो मजा आता है बच्चों को ये करने में. फिर हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं. हम जैसे हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट कैन रिस्पायर एरोबिकली एज वेल एज एनारोबिकली. तो ये बच्चे को कैसे प्रूफ कर, थोड़ा सा हम समझा सकते हैं कि अब हम सब लोग घर में ब्रेड बना रहे हैं या केक बना रहे हैं, या हम लोग ने भटूरे तो सभी ने घर में बने होंगे एक ना एक बार. ठीक है, तो जब हम भटूरे का आटा गूंथते हैं, तो आटा तो है ही आपका सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसमें आपने थोड़ा सा बैक्टीरिया डालते हो, दही डाल दिया आपने, या फिर आप उसमें यीस्ट ही डाल दिया, ताकि उतना जितना अच्छा मटेरियल होगा उतना ज्यादा वो फूलता है. तो बाजार में तो नॉर्मली इट इज मेड फ्रॉम यीस्ट ओनली, जो बड़े बड़े भटूरे फूले हुए होते हैं. क्योंकि ठीक है, और फिर हम उसको आटा लगा के उसको कवर करके रख देते हैं. करते हैं कि नहीं कवर? यस मैम. तो अब क्यों करते हैं हम, ये क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं. सब बच्चों को पता होगा कि हम कवर करते हैं, पर क्यों करते हैं? लाइट से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको. ठीक है, अब इसका आंसर को ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ओपन छोड़ देंगे तो ऊपर से सूख जाएगा. ठीक है, एक रीजन ये भी है. लेकिन कवर हम नॉर्मली इसलिए करते हैं कि इसे कम से कम ऑक्सीजन मिले. ठीक है, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो ये जो इसके अंदर यीस्ट डला हुआ है, that will perform anaerobic respiration. Okay, it will release carbon dioxide, and this carbon dioxide is trapped inside the dough. और उसकी वजह से जो फ्लफीनेस आती है डो की, वो उस वजह से आती है, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, दिस इज. हाँ जी बताइए. Ma'am, one question, ma'am. When yeast respires aerobically, then also it must be releasing carbon dioxide only. Exactly, ma'am. तो मेरा आपके पॉइंट से ही मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर हम एक आटे को एनारोबिक कंडीशन में फुलाएं और एक एरोबिक कंडीशन में फुलाएं, आपके हिसाब से किस में ज्यादा फूलना चाहिए? फ्लफीनेस ज्यादा किस में होगी, एरोबिक कंडीशन में या एनारोबिक कंडीशन में? एनारोबिक कंडीशन. हाँ जी, सारिका मैम बताइए क्यों होगी? Carbon dioxide will not be released. It will not get reacted with oxygen. Carbon dioxide never get reacted with oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जैसे कि मैम ने बोला कि एरोबिक में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. और अगर आप रिएक्शन देखें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का,
एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, लेकिन आप अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। तो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रहे हैं, है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि एरोबिक में फूलेगा ज्यादा, पर होता क्या है, फूलता एनारोबिक में ही है। इसका रीजन क्या है? आप एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, अगर आपका एक कंटेनर है उसमें कुछ ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन यूज हो रही है, जो भी डो के अंदर है वो ऑक्सीजन यूज हो रही है और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकल रहा है, जो जितनी जगह पहले ऑक्सीजन ने ले रखी थी, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो 6 मॉल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कुछ एक्सेस नहीं प्रोड्यूस हुआ है, जो जगह ऑक्सीजन ने ले रखी थी उस जगह में मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, तो एरोबिक में वो कम फूलता है। पर एनारोबिक में क्या है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है, पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो जो भी चीज चाहे वो कम प्रोड्यूस हो रही है, सिर्फ 2 मोल प्रोड्यूस हो रही है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, पर वो अपनी एक जगह बनाएगी। दैट इज व्हाई एनारोबिक रेस्पिरेशन में देयर विल बी मोर फ्लफीनेस एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना? राइट मैम, थैंक यू मैम। मतलब ये इसको हम घरेलू चीजों से के साथ हम जोड़ सकते हैं कि क्यों हम कोशिश करते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ज्यादा फूल जाता है अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके। एरोबिक में भी फूलता है बट कंपैरेटिवली कम फूलता है वो। और ठीक है, so I am going to talk about the second R now of living organism, that is reproduction in plants. Okay, myself, I am a reproductive biology. I have worked on reproductive biology of the plant. I have worked on endemic species of Western Ghats. I have selected 2 species. I have worked on those species. और मैं ये बता दूं कि reproductive biology की study आसान नहीं होती है। आपको एक प्लांट को उसके फ्लावरिंग पीरियड से लेकर जब तक वो जर्मिनेट नहीं होता, आप you have to study that plant. Okay. And therefore you need to understand each and every part of the plant. Okay. Now, how does this reproduction take place? I'm talking in view of how kids will understand it. Okay. हम लोग schools में हम animal reproduction की बात करते हैं, तो मेरा एक सजेशन आप समझ सकते हैं कि आप हमेशा एनिमल रिप्रोडक्शन से पहले प्लांट रिप्रोडक्शन बच्चों को पढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा, उनका एक समझ बैठ जाएगी अबाउट द सिंगैमी, अबाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, अबाउट द 2 gametes coming from 2 different parents. So that forms a link. उसके बाद उनको एनिमल्स में ये अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। आफ्टर यू यूज दीज टर्म्स continuously, so animals maybe they will be comfortable in using these terms, male gamete and female gamete, तो वो आराम से यूज कर सकते हैं। It's like this only, ma'am. In class 7th, we have reproduction in plants, and in class 8th, we have reproduction in animals and human beings. Sure, ma'am. Must be syllabus has been organized, keeping the same thing in the mind. Yes. Okay, because I am not very versed with the syllabus, but I know that these 2 things are taught. Okay. लेकिन वही डेफिनेट चीज है कि प्लांट रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाना फिर जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। और सिर्फ माय चाइल्ड इज इन क्लास 9th, द एल्डर वन, तो उसको मैं बॉटनी क्यों, पर उसको बॉटनी में इंटरेस्ट नहीं आता ज्यादा। वो कहता है कि बहुत सारी टर्म्स याद करनी पड़ती है इसमें, बायोलॉजी में ही इनफैक्ट। तो हमारा ये एम होना चाहिए कि हम हर जो टर्म उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, या तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हो या उनको उनका मीनिंग समझ आ जाए, ठीक है, ताकि वो उसको बार बार यूज करें तो उनको ऐसा ना लगे कि वो रट रहे हैं, ठीक है। तो जैसे प्लांट रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो बहुत सारी नई टर्म्स उनके पास आती है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो अगर हम एक बार उनको बताते कि एंड्रो मीन्स मेल एंड गाइनी मीन्स फीमेल, तो उसके बाद की अगर और भी लाइफ में वो कोई टर्म इस तरह की पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम पढ़ रहे हैं या कुछ भी मेल रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो उनको वो वर्ड याद रह जाएगा कि हम प्लांट्स में इस तरह का
यूज करते हैं, तो इसका रिलेशन कुछ ना कुछ मेल रिप्रोडक्टिव वो स्ट्रक्चर। देखो ना 10th वाला पोल था, रेस होगा फिर तो। So how does reproduction takes place in plant? So we know that कोई भी चीज जर्मिनेट करनी है, हमें दोबारा पुराने प्लांट से नया प्लांट बनाना है, we usually require seed of that plant. That is a natural phenomenon. Okay, हम पेड़ को काट के लगा दे, that is also a phenomenon, that is asexual reproduction. I'll be talking a bit about that also. But more about the seed germination, because I have seen this practical syllabus, I found that this experiment is there. And again, this is one of the experiment jahan pe you can do number of projects on this experiment. Large number of projects can be designed, given to the students. Again, all experiments based on the seed germination are low cost activities. So very effective, and a student can easily understand all the structure of the seed and how does germination take place. Root क्या है, shoot क्या है, वो सब इस experiment से उनको समझ आ जाता है. Okay, so ये जो experiment है जो आपकी practical books में दे रखा है, तो बहुत ये experiment है जो हम में हर रोज नाश्ते में ही शायद हम लोग करते होंगे, कि हम अंकुरित मूंग खा रहे हैं, अंकुरित चना खा रहे हैं, तो sprouting. Okay, so what is sprouting? Sprouting is nothing but it is the germination in the seed. Okay, so for this you take a few gram of मूंग और साइसर या कोई भी easily available. अगर आप ऐसी कोई दाल ले लोगे बच्चों को समझाने के लिए जिसका सीड कोट बहुत हार्ड हो, okay, जो वाटर एब्जॉर्ब ना करता हो इजीली, ठीक है, जो खुद ही डॉर्मेंट सीड है, तो फिर बच्चे का एक्सपेरिमेंट फेल होगा. तो हम कोशिश करते हैं कुछ भी ले ले वो, बट जर्मिनेशन 2-3 दिन के अंदर आ जाए, उससे ज्यादा पेशेंस बच्चों में नहीं होता है, ठीक है. और वो चीजें खराब भी होने लगती है, बिकॉज हमारे पास हम उसे एक एनवायरमेंटल कंडीशन हम डिफरेंट दे रहे हैं उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए. तो इसलिए हम सिलेक्टेड सीड्स ही लेते हैं नॉर्मली, बट अगेन यू कैन प्लान योर एक्टिविटी. बच्चों को बोलो कोई भी दाल उठाओ, देखो, दिस कैन बी वन एक्सपेरिमेंट कि कितने दिन में जर्मिनेट हो रहा है ये. Okay, that is important. Okay, so this we know that उसको हम सोक करके रखते हैं, overnight सोक कर दिया आपने सीड्स को, so they take the moisture, okay, they swell, and after that उसमें से पानी निकाल देते हैं. उसको सारा टाइम पानी में डूब के नहीं रखते, बस moisture आना चाहिए. It should get moisture rich condition, and then they will sprout. Okay, so this is the experiment when you do seed germination, but you can modify, you can plan this experiment in different ways, and I'm going to ask you that soon. So the simplest way is that हम labs में कराते हैं, तो हम petri plates use कर सकते हैं. So you use the petri plates, और पेट्री प्लेट के अंदर आपने अपना सीड्स को रखा और जर्मिनेट किया. बच्चों को जब हम घर में देते हैं एक्सपेरिमेंट, तो अगेन जो इजीली अवेलेबल है, डिस्पोजेबल ग्लासेस, ओके, डिस्पोजेबल ग्लास में आपने कॉटन वेट करके डाला, तो आपने उसको मॉइस्चर रिच कंडीशन प्रोवाइड कर दिया, एंड देन यू स्टडी द सीड जर्मिनेशन. अगर आप कॉटन में नहीं कराना चाहते, आप सेम एक्सपेरिमेंट सॉइल में भी करा सकते, ठीक है. There can be different result in cotton and soil, not for the in terms of germination, but maybe in terms of the growth of the plant. Okay? So why do seeds do not germinate in storage? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि अगर सीड्स इतने आसानी से जर्मिनेट हो रहे हैं, तो हम बच्चों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो स्टोरेज में क्यों नहीं जब हमने डब्बे में रखे हैं मम्मी ने सीड्स, तो वो क्यों नहीं जर्मिनेट हो रहे वहां पर. Germination conditions are not. Sorry ma'am, can you repeat? थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा था. Germination conditions are not met. Right. So there are specific set of germination condition, and the most important condition is there, which is it requires water. Okay. So germination क्या होता है? Germination में there are number of changes that take place in an seed. सबसे पहले the first process which take place is imbibition. Okay. Imbibition is just swelling of the seed. वो imbibition तो हम दाल पकाने से पहले भी करते हैं, राइट. राजमा पकाना हो तो रात को भिगा के रख देते हैं ताकि सीड्स फूल जाएं, वो पानी एब्जॉर्ब कर ले. ओके, so that process is called as imbibition.
जर्मिनेशन में इम्बाइबिशन का क्या रोल है, क्यों हम इम्पोर्टेंट है? बिकॉज द हार्डेस्ट लेयर ऑफ द सीड, सबसे बाहर की लेयर है सीड कोट. द फंक्शन ऑफ सीड कोट इज प्रोटेक्शन. वो जितनी ज्यादा हार्ड होगी, जितनी ज्यादा टफ होगी, सीड उतना प्रोटेक्टेड है. ठीक है, तो पहला काम अगर हमें कोई सीड जर्मिनेट कराना है तो सीड कोट हटाना है. ओके, तो खुद से ना हटा, खुद से तो हटेगा भी नहीं. आप चने का खुद से हटा के देख लो, नहीं हटेगा. बट अगर आप उसको पानी में भिगा के रख दें तो क्या होता है, सीड विल स्वेल. Because of that force, the seed coat gets ruptured easily. So this is the first part of your seed germination process. Second thing, जब भी उसको पानी मिलता है, yesterday also I said that enzymes need water. They work in aqueous condition. ठीक है, तो जर्मिनेशन के लिए उसके अंदर की जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक सीड के अंदर स्टोर्ड प्रोडक्ट है. या तो वो स्टार्ची सीड होगा, या वो प्रोटीनेशियस सीड होगा, या वो ऑयल सीड होगा. जो भी स्टोर्ड प्रोडक्ट है उसके अंदर, दैट हैज टू बी यूज्ड अप. उसको यूज करने के लिए दैट मीन्स इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ओके, तो इसके लिए बहुत सारे एंजाइम चाहिए, एंड एंजाइम्स वर्क इन एक्वस कंडीशन. ओके, साथ में उसको एनर्जी भी चाहिए. सो द प्रोसेस which takes place in the germinating seed, stored seeds में नहीं है, सिर्फ germinating seeds में है, that is the process of respiration. Okay, this is the second important thing which a seed germination will show. Okay, third is mobilization of reserves during seed germination and role of the growth regulators. As I said कि उसके अंदर रिजर्व फूड है, वो रिजर्व फूड को सिंपलेस्ट शुगर में टूटना है. जैसे ऑयल है, ऑयल भी शुगर में टूटेगा. प्रोटीन है, वो भी शुगर में टूटेगा. और जो शुगर है अगर वो स्टार्च फॉर्म में है तो वो सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में टूटेगा. ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होगा, फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा. ओके, तो उसके लिए बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, एंड दीज एंजाइम्स आर नॉर्मली सिक्रीटेड बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ दीज ग्रोथ हार्मोन्स, such as the most important growth hormone present in the seed is gibberellic acid. Gibberellic acid present, जैसे ही activate होगा gibberellic acid, seed germination will start. So gibberellic acid is promoting seed germination. अगर abscisic acid ज्यादा होगा तो seed will become dormant. जितना ज्यादा abscisic acid, seed remains dormant, और जितना ज्यादा gibberellic acid, seed germinates. Okay, and the last part is the development of the embryonal axis into seedling. तो हमें पता है कि पहले radical निकलता है और फिर plumule निकलता है. So the first white part which emerges out from the seed is the root part, which you also called as radical. Oops. Okay, so the important thing is water. So पहला एक्सपेरिमेंट जो आप बच्चों को दे सकते हो, इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि आप बच्चों को सोचने को अलाउ कर दो कि बेटा तुमको हमने बता दिया सीड कैसे जर्मिनेट होते हैं. थिंक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, थिंक ऑफ अ प्रोजेक्ट कि क्या आप उस पर प्लान कर सकते हो. तो जैसे आप लोग बता सकते हो कि अलग अलग सीड्स ले लिए, अलग अलग तरह की दालें ले ली, सबको जर्मिनेशन आपने प्री सोक करा, उसको एक जर्मिनेशन मीडियम में रखा. सो जर्मिनेशन मीडियम कैन बी योर सॉइल और इट कैन बी कॉटन, एनीथिंग, और बट मॉइस्चर रिच कंडीशन चाहिए. तो देखो कि कितने टाइम में कौन सी दाल जर्मिनेट हो रही है. यू कैन कलेक्ट यू कैन गैदर अ डाटा फ्रॉम इट, कि नेक्स्ट टाइम आपको अगर बताना हो तो बच्चों को बता सकते हो कि भैया इस दाल को इतना टाइम लग रहा है, इस दाल को इतना टाइम लग रहा है, तो बेटर अगर आप ये वाला दाल लोगे तो आपका एक्सपेरिमेंट इतने टाइम में खत्म हो जाएगा. ठीक है, देन कितना पानी चाहिए, हम कह रहे हैं दे शुड बी सोक्ड. उसके बाद हमने उसको मॉइस्चर रिच कंडीशन में रख दिया. तो व्हाट इज दिस मॉइस्चर रिच कंडीशन? ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि
मॉइस्चर तो बहुत जरूरी है। मैंने आपको पानी का रोल बता दिया। इसके लिए आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, आपने लैब कर, ये वही किसी भी चीज में कर सकते हो आप, कॉटन में भी कर सकते हो, किसी में भी ग्लास जो डिस्पोजेबल ग्लासेस है बच्चा घर में कर सकता है। तो नॉर्मली एक्सपेरिमेंट तो आप छुट्टियों में बच्चों को दे सकते हो कि आप परफॉर्म करो, अगर आप उन्हें पहले समझा चुके हो तो। ठीक है, तो टेक पेट्री प्लेट, 4 हमने कंडीशंस दिया। एक में हमने मॉइस्टेंड फिल्टर पेपर रखा, बट उसमें ओके पानी रखा, उसमें उसको बस गीला कर दिया, द वेट फिल्टर पेपर और द ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर, कॉटन, कुछ भी रख सकते हैं। दैट मीन्स कि पानी को काफी देर तक रिटेन करके रख सके, जल्दी इवेपोरेट ना हो। सेकेंड कंडीशन में आपने रखा ड्राई फिल्टर पेपर। इसमें आपने मॉइस्चर नहीं डाला, पानी नहीं डाला, सूखा हुआ आपने ब्लॉटिंग पेपर कॉटन सूखा रख दिया। दोनों कंडीशन में आपने प्री सोक्ड सीड्स रखे हुए, ठीक है, आपने पहले से भिगाए हुए और आपने रख दिए। एक कंडीशन आपने ऐसे ले ली जहां आपने ड्राई वो लिया फिल्टर पेपर और सीड्स भी आपने ड्राई डाल दिए, ठीक है, जो आपने सोक नहीं करे, द नेचुरल स्टोर्ड सीड्स। और फोर्थ कंडीशन में आपने फिल्टर पेपर रहने दो, आप पूरे ग्लास को पानी से भर दो, ठीक है। सो ऑल द सीड्स आर properly dipped in water. This is not called soaked, ये dipped in water है, ठीक है। उसके बाद जैसे नॉर्मल आपको पता है सीड्स कितने दिन में जर्मिनेट होंगे, तो उतने दिन बाद आप ऑब्जर्व करो उसको। मेक श्योर कि जो आपका फर्स्ट है मॉइस्टेंड फिल्टर पेपर, उसको बीच बीच में ऑब्जर्व करते रहो कि वो मॉइस्ट ही रहे। अगर वो ड्राई हो रहा है तो हल्का सा पानी फिर उसमें स्प्रे कर दीजिए। तो आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट जो मॉइस्टेंड फिल्टर पेपर है उसमें सीड जर्मिनेशन हो रहा है। जो ड्राई फिल्टर पेपर है लेकिन सीड्स प्री सोक्ड थे, वहां पर जर्मिनेशन हुआ, लेकिन क्योंकि पानी फिल्टर पेपर में नहीं है तो इन रेडिकल्स को पानी नहीं मिला और वो श्रिवल हो गए, वो ड्राई हो गए, सूख गए। यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है जहां पानी बिल्कुल भी नहीं है, ना तो प्री सोक्ड है, ना सीड के अंदर पानी है, ना बाहर पानी है, वो वैसे ही रहेंगे, स्टोर्ड कंडीशन में जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और जहां आपने ओवर वाटर डाल दिया, ज्यादा ही पानी डाल दिया, वहां पे हो सकता है जर्मिनेशन हो जाए लेकिन सीड्स सड़ जाएंगे, देयर विल बी फंगल इन्फेक्शन इन द सीड। So this you can make students understand कि ओवर वाटरिंग से क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है सीड पे। उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। पानी के अंदर स्पोर्स होंगे, फंगल स्पोर्स, उनको एयर मिल रही है, दे कैन जर्मिनेट देयर एंड फंगल इन्फेक्शन कैन अकर। ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हेन यू सोक सीड्स इन टू मच ऑफ वाटर, व्हेन यू कीप। सो इसलिए जर्मिनेशन, जब हम कभी भी सीड प्लांट का सीड हम खेतों में बोते हैं, तब उस टाइम पे बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। पानी चाहिए होता है जब एक बार पौधा बन गया उसके बाद, ठीक है। So this is the other modification of an experiment. Is there any effect of light on seed germination? तो ये एक्सपेरिमेंट आप में से कोई मुझे बताएगा, जैसे मैंने पिछला वाला बताया, आप इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को? One set up in dark room, the other set up in the light. Okay. And when you are comparing only light, that means all other conditions will be same. तो आपने पिछले एक्सपेरिमेंट में देख लिया कि आपको एक तो प्री सोक्ड सीड चाहिए, ठीक है, दूसरा आपको मॉइस्टेंड कंडीशन चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन में अब आपको सीड नहीं रखना है, इस कंडीशन में रखना है। इसको एक को लाइट में रख दिया और एक को डार्क में रख दिया। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि एक चीज तो डिपेंड करेगी कि आपने किस में ग्रो करा है प्लांट। अगर मान लो आप कॉटन में ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो कॉटन में ग्रो करने से क्या होता है कि प्लांट्स बढ़ते हैं क्योंकि मॉइस्चर रिच कंडीशन मिल रही है, जर्मिनेशन आप देख सकते हो। लेकिन अगर प्लांट ग्रोथ देखनी है तो थोड़े टाइम के बाद प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए, क्लोरोफिल बनना है उसमें, ठीक है। इनिशियली क्लोरोफिल नहीं होता है, थोड़े बहुत जो उसके अंदर सीड के अंदर न्यूट्रिएंट होंगे वो यूज होंगे इनिशियली, उसके बाद इट विल रिक्वायर मोर न्यूट्रिएंट्स, देन यू विल हैव टू ट्रांसफर दोस प्लांट्स टू सॉइल। तो बेटर है कि हम इसको सीड जर्मिनेशन हम इसका सॉइल में दिखाते हैं, वन इन लाइट कंडीशन एंड वन इन डार्क कंडीशन। और तब क्या फर्क आएगा?
आपके हिसाब से क्या फर्क आना चाहिए लाइट या डार्क में? जर्मिनेशन किस में ज्यादा होगा? Under light, when more light is. Why? Oh no, sorry ma'am. Dark. डार्क में ज्यादा हाँ। होगा, क्यों होगा डार्क में ज्यादा? देखिए जर्मिनेशन, जब हम सीड के जर्मिनेट की बात कर रहे हैं, अंकुरित करने की बात कर रहे हैं, लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में, ठीक है? डार्क में भी जर्मिनेट हो जाते हैं और लाइट में भी जर्मिनेट हो जाते हैं। बट अगर आप उनको उसी कंडीशन में रहने दे रहे हैं काफी टाइम तक, तो जब लीव्स बनती हैं, जब जर्मिनेशन इतना हो जाए कि वो सीडलिंग बन जाए, उस कंडीशन में लीव्स नीड टू फोटोसिंथेसाइज, क्लोरोफिल हैज टू बी सिंथेसाइज, वो लाइट की कंडीशन में होता है। ठीक है, तो जर्मिनेशन तो दोनों में बराबर होगा, लेकिन ग्रोथ ऑफ द प्लांट विल बी डिफरेंट। ओके, तो ये वाला जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज देख रहे हैं, ये डार्क कंडीशन में है, और राइट हैंड साइड पे जो इमेज है वो लाइट कंडीशन में है। तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट डार्क कंडीशन में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसको कहते हैं इटियोलेशन। प्लांट ढूंढता है कि मुझे कहीं से लाइट मिल जाए, तो वो लंबे लंबे हो जाते हैं सीडलिंग्स, कहीं से तो लाइट मिल जाए मुझे, ठीक है? और लेकिन जो लाइट कंडीशन जिनको मिल रही है वो अच्छे खासे हरे होंगे और स्टर्डी होंगे, उनको लंबा होने की जरूरत नहीं, उनको वहीं पे लाइट मिल रही है, ठीक है? तो वो काफी स्टर्डी होंगे, ये नहीं कहूंगे कि छोटे होंगे, वो अपनी ग्रोथ के हिसाब से बढ़ेंगे। लेकिन जो अगर आप उसको ये डार्क कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो दे विल बी पेल, वो ग्रीन नहीं होंगे, हल्के येलोइश से दिखेंगे और बहुत लंबे लंबे प्लांट्स होंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस इन ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग बट नॉट इन द जर्मिनेशन, ठीक है? तो सीडलिंग की रिक्वायरमेंट अलग है, लाइट की, सीड्स की अलग, ठीक है? सो बेसिकली हम सीड्स में हम कह रहे हैं कि उसको बस इम्बाइबिशन करना है, रेस्पिरेशन करना है, और इन दोनों प्रोसेस के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? और हमको पता है हम सॉइल के अंदर सीड डालते हैं, अगर हमें एक बच्चे को समझाना है तो हम सॉइल के अंदर सीड डालते हैं, सॉइल के अंदर लाइट नहीं मिल रही उसको, जब वो बाहर आ जाता है, पहला पत्ता उसमें बन जाता है, तब उसको लाइट चाहिए, इसीलिए वो बाहर आ रहा है। जब तक उसको लाइट नहीं चाहिए वो अंदर ही जर्मिनेट होता रहता है, पहले रूट बनती है प्लांट्स सीड्स में, ठीक है? तो आई हैव गिवन मल्टीपल एग्जांपल्स हियर। ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सेम आपने अपने सेटअप बनाए और उनको अलग अलग टेम्परेचर्स पे रख दिया, एक को उठा के फ्रिज में रख दिया, एक को बाहर कमरे में ही रहने दिया, एक को थोड़ा सा उसमें इंक्यूबेटर्स में रख दिया एट हायर टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा सकते हो। सो बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है कि वो अच्छे टेम्परेचर, मतलब इट रिक्वायर्स एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर गुड रेस्पिरेशन। सो नॉर्मल टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल बी हायर, germination will be higher, like this. Okay, so germination increases with the increase in temperature, but at very high temperature it sharply decreases, same as respiration. Now do all seeds germinate? हमने सबसे पहले एक एक्टिविटी बोली कि आप बच्चों को बोलो कि अलग अलग तरह की दालें लो और उनको जर्मिनेट करो और फाइंड आउट कौन कितने टाइम में जर्मिनेट हो रहा है। That can give you an idea of dormancy of the seed, कि कौन सी दाल कितना ज्यादा डॉर्मेंट है, किसका सीड कोट कितना हार्ड है। हाउ कैन यू ब्रेक दैट डॉर्मेंसी? आप सीड कोट को स्क्रैच कर दो, पिन कर दो उसमें, तो हो सकता है वो जल्दी जर्मिनेट कर जाए। तो अगर सीड कोट बहुत मोटा है, आप उसमें पिन्स चुबा दो तो पानी अंदर घुस जाता है और उसके बाद वो इजीली जर्मिनेट कर जाते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज हियर। लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट कि डू ऑल सीड्स जर्मिनेट। मैंने 10 साइसर के सीड्स लिए, तो क्या सारे जर्मिनेट करते हैं? नहीं करते, राइट? हो सकता है सारे कर जाएं, अगर बड़ी अच्छी दाल है आपकी, सारे हेल्दी सीड्स हैं, तो हो सकता है सारे जर्मिनेट कर जाए। बट ये जो परसेंट जर्मिनेशन हम निकाल सकते हैं कि आउट ऑफ 10 सीड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ सीड्स हैव जर्मिनेटेड इन योर culture medium or in your petri plate, that tells you the viability of the seed. और viability important हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम तो
हम तो मुट्ठी भर के अंकुरित चना खाना है, लेकिन फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. The farmers should know that what is the percent germination of the seeds that they have taken. तो एक सैंपल स्लॉट लेते हैं, उसको जर्मिनेट करते हैं, एंड इट इज 50% तक भी हो जाते हैं तो वो उसको फील्ड में बो देते हैं. इनफैक्ट अगर 50% जर्मिनेशन है तो नॉर्मली टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग अ प्लांट, एक गड्ढे में वो 2 सीड डालते हैं. सो द चांसेस ऑफ दिस forming a plant increases. Okay. However, a seed is called as good seed if 80% of them germinate. Okay. So how do you calculate this percent germination? ये experiment भी आप बच्चों को करा सकते हो. अभी तक आप germination देख रहे हो, अब आपको count करना है. आपने 10 seed रखे, 10 seed में से कितने germinate हुए. ऐसे आपने 10 ग्लास रख दिए तो आपका काउंट 100 के करीब हो गया. आपने 100 सीड्स में देख लिया कितने जर्मिनेट हुए, दैट विल बी योर परसेंट जर्मिनेशन. ओके, सो दैट कैन टेल यू द क्वालिटी ऑफ सीड. कई बार हम दालें भी लाते हैं तो कुछ सीड्स पिचके से होते हैं, वो अच्छे जर्मिनेट नहीं करते. कुछ हेल्दी मोटे मोटे सीड्स होते हैं, वो अच्छे जर्मिनेट करते हैं. तो दैट कैन टेल यू द क्वालिटी. परसेंट जर्मिनेशन कैन टेल यू द क्वालिटी ऑफ द सीड. एंड रिसर्च लैब्स में ये बहुत सिंपल है पर बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो किया जाता है. क्योंकि जब हम पेट्री प्लेट में रख रहे हैं तो हम 5-8 इनसे ज्यादा सीड्स नहीं रख पाते. ग्लास का भी, डिस्पोजेबल ग्लास में भी हम 4-5 सीड से ज्यादा नहीं रख सकते. फिर सीड के साइज पे भी डिपेंड करता है हम कितने सीड रख पाते हैं. सो दिस इज अ रैगडॉल मेथड ऑफ सीड जर्मिनेशन. एंड not only in the research lab, many of the farmers also perform this test before planting, before sowing their seeds into the fields. Okay, so इसमें वो रैगडॉल टेस्ट में आपको क्विकली बता दूंगी कि इसमें आपने एक टॉवल लिया, पेपर टॉवल ले लिया या फिर कॉटन का कपड़ा ले लिया. इजीली अवेलेबल होता है फार्मर्स के पास. पुराना कॉटन का कपड़ा लिया और उसमें सीड्स को रोज में रखते गए, इक्विडिस्टेंट रखते गए दूर दूर, और करीबन ये 10 रो बना दी, 10 कॉलम बना दिए, तो करीबन 100 सीड्स एक कॉटन के कपड़े में आ गया. दूसरी साइड पे इस पे एक स्टिक रखा और इसको रोल कर दिया. ठीक है, रोल करते करते ये सीड्स हिलने नहीं चाहिए. चाहो तो इसके ऊपर एक और गीला कपड़ा रख दो, बट सीड्स हिलेंगे नहीं. वो एक दूसरे से दूर भी रहेंगे, वो सेपरेटेड है. और एक ये आप देख रहे हो, ये रोल बेलन जैसा रोल बन गया है नीचे. एक इतने पतले से रोल के अंदर आप 100 सीड्स का जर्मिनेशन एक बार में देख रहे हो. ठीक है, तो आप कितने भी सीड्स, कितने भी ऐसे स्टिक्स बना लो, रोल बना लो, और उसको बीच बीच में उसको वेट करते रहते हैं, पानी से भिगोते रहते हैं. और 3-4 दिन के बाद आप उसमें उसको खोल दो, वैसे ही बिछा दो, वापस खुल जाएगा. और ये खुला हुआ है नीचे इमेज में. एंड यू कैन सी द सीड्स उसी लाइन में है, उसी तरीके से. और यहाँ से आपको आराम से आप काउंट कर सकते हो कौन सा जर्मिनेट हुआ है, कौन सा जर्मिनेट नहीं हुआ है. So this method is ragdoll method, simple method, and also a method which is applicable at the level of cultivation. Okay, farmers use कर रहे हैं इस method. Simple seed germination method, which is important. Farmers को पता होना चाहिए कि उनके पास किस क्वालिटी का सीड है. अगर बहुत कम जर्मिनेट हो रहे हैं तो वो एक जगह पे ज्यादा सीड्स डालेंगे कि वो जर्मिनेट कर सके. So you can explain the students की एक ग्रास रूट लेवल पे क्यों इंपॉर्टेंट है. हम जो एक्सपेरिमेंट लैब में स्टडी कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए नहीं कर रहे. कहीं ना कहीं ये फार्मर्स के काम आ रहा है. हु इज द प्रोड्यूसर, जो हमको खाना खिला रहा है. ओके, so and similarly you can ask a number of questions to them based on the germination. They can make projects based on them. So germination is one such topic, seed germination. How do all seeds have same requirement for germination? ठीक है, फिर वही अलग अलग तरह के सीड्स लिए, किसी में कुछ चेंज करा, किसी में कुछ चेंज किया. हो सकता है कोई सीड 35 डिग्री पे अच्छा जर्मिनेट करता हो सकता है कोई सीड 25 डिग्री पे अच्छा जर्मिनेट करता हो. क्या पता किसी सीड को कोई कॉटन में जर्मिनेट ही ना करे, उसको सॉइल ही चाहिए जर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि उसमें इनिशियली कोई एलिमेंट नहीं है. ओके, एंड जस्ट होल्ड ऑन.
That was my younger son. Okay. So you can say, why do plants require soil when seeds can germinate in wet cotton? जब कॉटन में जो जर्मिनेट करे तो सॉइल की क्यों जरूरत है? तो हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर सकते हैं, किस किस न्यूट्रिएंट, कौन कौन से न्यूट्रिएंट सॉइल में अवेलेबल होते हैं. तो they will have a lot to discuss in their project here, okay, and they can modify it accordingly. If you remove the seed coat, will seed germinate? और होगा तो जल्दी होगा या देर से होगा? How can you remove seed dormancy? Okay, so multiple type of questions can be asked based on this experiment, and I wish that this ये experiment तो हम seed germination को बहुत simply ले लेते हैं, experiment है, सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसको अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, ये हम सब के ऊपर है, ये टीचर्स के ऊपर है. ओके, so if you have any questions, I have 10 minutes left, so if you have any questions you can go ahead with those questions. अभी तक जितना समझाया वो आई होप कहीं काम आएगा आप लोगों को. यस मैम. तो अभी कुछ और आप इसमें, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम और क्या प्लान कर सकते हैं इसमें, डॉर्मेंसी कैसे चेक कर सकते हैं, सो यू कैन प्लीज गो हेड विद द डिस्कशन, क्योंकि इसके आगे मैंने ज्यादा कुछ नहीं, हालांकि मैं रिप्रोडक्शन तो डिस्कस कर ही नहीं पाई हूँ, बट मैंने उसके बाद आप बच्चों से ये हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? जैसे मैंने पूछा था कि कैन सीड्स जर्मिनेट इनसाइड फ्रूट्स, हमें सीड जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर चाहिए, फ्रूट्स के अंदर, एप्पल के अंदर मॉइस्चर है, हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, एप्पल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, तो क्या सीड जर्मिनेट उसमें होता है? नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, और होता है तो सभी सीड्स में, सभी फ्रूट्स में क्यों नहीं हो जाता फिर? तो these things can also be discussed with students. You can again give them some projects. टमाटर आप लोगों ने बहुत कॉमन देखा होगा, अगर पड़ा रह जाए टमाटर तो आपने अंदर सीड जर्मिनेशन देखा होगा टमाटर, ठीक है? किसी ने देखा है? बहुत कॉमन है ये. यस मैम. है ना? और मैं तो अक्सर भूल जाती हूँ तो मेरे टमाटर पड़े रह जाते हैं तो जर्मिनेट भी कर जाते हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज विविपेरी, दैट इज growth of organism inside the parent, which is called विविपेरी. तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कितना एनिमल्स और प्लांट रिप्रोडक्शन काफी सिमिलर हो जाता है. यू कैन डिस्कस सीड के बारे में बच्चों से, हाउ द सीड डेवलप. तो ये एक्सपेरिमेंट आप सिर्फ फोटोग्राफ से ना दिखाकर, यू लेट देम एक्सप्लोर, टेक देम टू सम गार्डन, स्वीट पी आराम से यू कैन सी दैट प्लांट. तो उसके आप ओवरी देखें तो इसी तरह से कर्व्ड होती है, ठीक है? आप कोई भी फ्लावर लीजिए, नॉट वेरी यंग बट अच्छा खासा मेच्योर फ्लावर लो, तो उसकी ओवरी भी बड़ी होती है, उस ओवरी का आप छिलका उतरवा लो, ठीक है, या बीच में से सेक्शन कटवा लो, एनीथिंग. उसको देख के बच्चा समझ सकता है कि इसका फ्रूट कैसा बनेगा. सो दैट will help him to understand कि जो फ्रूट डेवलपमेंट होता है वो इस ओवरी से होता है, और जो सीड डेवलपमेंट होता है वो ओव्यूल से होता है. यहाँ पे ओव्यूल भी सब साइड पे चिपके हुए हैं, which is called as marginal placentation. तो यहाँ भी ओव्यूल सब साइड में चिपके हुए हैं. इस कंडीशन में आप देखो एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ओव्यूल बीच में है, तो पियर के ओव्यूल भी या एप्पल के ओव्यूल इसी तरह से आते हैं, दे बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली, ठीक है? टमाटर का पौधा आजकल आप घर में बीज डाल दो, पौधा बड़ी जल्दी उगता है टमाटर का, और इजीली उग जाता है. तो उसके फ्लावर्स में अगर आप ओवरी का सेक्शन काटो तो बीच में देखना प्लेसेंटा जो होता है वो फूला हुआ होता है. दिस इज कॉल्ड सोलन प्लेसेंटा, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली सोलनेसी, ठीक है? तो सोलन प्लेसेंटा अगर आप देखो टमाटर का, तो ये आप कोई टमाटर काट के देख लो तो बीच में आपको जो मोटा रीजन दिखता है दैट इज द प्लेसेंटा. तो इस तरह से बच्चे को फ्लावर और फ्रूट दोनों दिखाओ तो उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर हो जाएगी कि कैसे ओव्यूल से सिमिलर काइंड ऑफ सीड्स बन रहे हैं, राइट? सो फिर दिस कैन बी अदर एक्सरसाइज, लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम ब्रिंग एनी काइंड ऑफ फ्लावर. हो सकता है वो फ्लावर की जगह पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस उठा के ले आए, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि गेंदा का फूल नहीं है,
गेंदे का फूल क्या है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेंस से उठा के रहेगा। तो ये हमारा रोल है कि हम उसे समझाएं कि इसमें से फ्लावर कौन सा है और क्यों ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, एक फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। So you explain, that is how, after that you can explain them, the sepals, petals, androecium, gynoecium, each and every part, ठीक है। स्पोर जो रखता है उस रीजन को स्पोरेंजियम कहते हैं, और ये टर्म सिर्फ फ्लावर में नहीं है, फंगस में भी यही टर्म है, एल्गी में भी यही टर्म है। तो एक बार बच्चे को समझ आ गया तो स्पोर कंटेनिंग रीजन इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, तो वो टर्म स्पोरेंजियम उसको रटनी नहीं है, वो हर जगह उसको यूज कर सकता है। स्पोर्स का साइज छोटा है तो वो माइक्रो स्पोर्स हो गए, स्पोर्स का साइज बड़ा है तो वो मेगा स्पोर हो गए। तो ओव्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड एज मेगा स्पोर, जैसे पॉलन को माइक्रो स्पोर कहते हैं, ओव्यूल को मेगा स्पोर कहते हैं, क्योंकि इसके मुकाबले बहुत बड़ा है। okay? So I think I will end my talk here, otherwise ये खत्म अभी, अगर मैं रिप्रोडक्शन के आपको एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगी तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप लेट अस स्टिक टू जर्मिनेशन हियर। सिमिलर जैसे हमने ये सीड जर्मिनेशन किया, इसी तरह से आप पॉलन जर्मिनेशन भी प्लान कर सकते हो बच्चों के लिए। यही अलग अलग कंडीशन, सिर्फ पेट्री प्लेट में आपको एक चैम्बर बनाना है विच इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी चैम्बर, और पॉलन आपने एक पेट्री प्लेट में नहीं ग्रो करोगे, आप उसको स्लाइड पे ग्रो करोगे या कवर स्लिप के ऊपर ग्रो करोगे या कैविटी ब्लॉक पे ग्रो करोगे। सो पॉलन जर्मिनेशन इज बिट डिफरेंट, बट अगेन यू कैन डू मल्टीपल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन पॉलन जर्मिनेशन एंड कैलकुलेट पॉलन जर्मिनेशन, राइट। तो मैं लास्ट स्लाइड, आप इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट्स, अगर आप चैट बॉक्स में नहीं दिखा है तो you can discuss the seedless fruits with the student कि क्या seedless fruits होते हैं और क्या वो naturally occur करते हैं। Can anyone of you tell me a seedless fruit? Naturally occurring seed without any experiment, naturally occurring seedless fruit. है कोई फ्रूट ऐसा है जो बिना सीड के हो? Am I audible? बनाना हम कहते हैं बनाना, लेकिन बनाना के अगर आप तोड़ो तो आपको बीच में वो छोटे छोटे काले दिखते हैं। Yes, ma'am. Those are the aborted seeds. इसमें भी सीड्स होते हैं। इनफैक्ट ये आप इमेज देख रहे हो? Yes, ma'am. ये इमेज बनाना की है। This is a wild banana, जो एक्चुअल बनाना होता है। अब जो हम बनाना खा रहे हैं वो तो आफ्टर दिस प्रोपगेशन एंड ऑल, मतलब ट्रिप्लॉइड वेराइटीज एंड ऑल, वो सब खा रहे हैं वेराइटी वाले। ये वाइल्ड बनाना है और इसमें देखो कितने सारे सीड्स हैं, है ना। तो नेचुरली अगर हम करें तो बनाना के अंदर भी काले काले छोटे छोटे अबॉर्टेड सीड्स होते हैं। तो अगर फ्रूट है तो उसमें सीड भी होगा, ठीक है। So you can take a screenshot of this with the various sites I was talking about, which are good to teach this animal reproduction to students. And these are all not from the parents' point of view. These are from the point of view of a teacher. So that these sites are really going to help you. पेरेंट्स का तरीका अलग होता है। पेरेंट्स कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज तो बच्चा स्कूल में सीख लेगा। कई बार टीचर्स भी इस टॉपिक को इतनी जल्दी स्किप करते हैं कि अपने आप तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ये बताना बच्चों को। इट हैज नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ करिकुलम आल्सो। So it is good as a teacher if you know what has to be taught in the class and at what level. Okay, so please visit these sites and have an idea how to talk to students about these topics. और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम कुछ गलत ना बताएं। So I hope you have taken the screenshot of this. Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. So, Kakru sir. आपको कुछ पूछना है तो you can ask me, and then otherwise I'll hand over the mic to Dr. Kakru or Dr. Imtiaz.
If anybody has any question, kindly ask. Otherwise, then we'll close it because it has been hectic 3 days with every one of us. And at fight, most of the people were there. Yes, sir. It was a good interaction with everyone, because I've seen that teachers were really interested, and बहुत अच्छा लगा जब वो आपस में बात कर रहे थे, तो one side talk नहीं था ये, तो मुझे I enjoyed it. That is what was the objective of this. It shouldn't be one side talk. It has to be interactive. तो किसी का अगर क्वेश्चन नहीं है तो then we will thank Dr. Romila Bist for staying with us for all these 3 days on this workshop, and thank you people also, whosoever is with us. They stayed through all these 3 days. So there is one thing, only one request, ki kindly fill the feedback form, because that will be one of the criteria also for certificate distribution. We'll be sending the print copies. So I'll see how it can be sent, but it will be after 9th, because we are having 3rd workshop on Vedic maths from 7th to 9th. So all the 3 will be origami, life sciences, and Vedic maths. So those certificates will be accumulated and then sent at one place. So, Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Yeah. I'll take your leave now. Yes, everybody can take leave and we close it. Sir, request you to send the link for giving the feedback. Yes, that has been put in the chat box also, and that has been put in the WhatsApp group also. Thank you, sir. If you are in any of these two, you can pick. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. तो आप में से किसी को इंटरेस्ट हो फिर वैदिक मैथ में भी, they can also join. So we have given it to our maths teachers. We have passed it to our maths teachers. हाँ, that is correct. मतलब other than that भी individual भी कभी ये होता है ना, interest होता है उस point of view से. Okay, so we can join. Yes, that is open to all, but specifically yes to the math, because ultimately it is math that is being taught. Thank you, sir. Thank you. So thank you everyone. We close this workshop. Thank you.